Alright guys, welcome back to the another live stream of Witcher Ascension of Kings। और आज है लास्ट पार्ट विचर असेसिन ऑफ किंग्स का, और आज हम इस गेम को एंड कर देंगे। बट उससे पहले गेम को एंड करें कुछ स्टोरी रिकैप कर लेते हैं। तो गेम की शुरुआत होती है विचर 1 के एक हफ्ते बाद से। तो विचर 1 के एक महीने बाद से सॉरी। तो वहाँ पे हम लास्ट गेम में किंग फोर्ट्रेस के ऊपर हमला हुआ था, लेथो ने किया था। और उससे 4 महीने पहले किंग डेमावेट जो था एड्रिन का किंग, उस पर भी लेथो ने ही हमला किया था। ये है। तो अभिषेक गुप्ता हाय, अरे हाय भाई, कैसे हो आप? ठीक है। तो किंग अपन का ही बात करें तो किंग फोर्ट्रेस उन पे लेथो ने हमला किया था। तो उसके पीछे लॉज ऑफ सॉर्सर का हाथ था, और लॉज ऑफ सॉर्सर इसलिए करवा रही शायद ताकि वो पावर वगैरह में रहे, ऐसा कुछ। तो वो अपन देखते हैं, अभी गेम को लोड करते हैं पहले तो। गेम, यस भाई गेम। वेलकम टू द स्ट्रीम अभिषेक भाई, कैसे हो आप? लोडिंग हो जान दो उसकी। ठीक है, ये अपन यही पे थे ना लास्ट टाइम, यहाँ पे ये दोनों लोग, ये दो सॉर्सरर हैं। हेलो हेलो। अरे ये कुछ नहीं बोलती। आर्यन लेवल 8। We meet again. Who would have known? अभी ये जिंदा कैसे है? Cats always landed on 4 paws, but I see wolves sometimes do as well. I trust you have not come to demand my surrender again. I've come to find the Kingslayer. And once again don the robes of a hero? Enjoy the fame? I don't know about robes, Aryan, but something along those lines. Well, as much as I detested Foltest, Temeria now trembles in its foundations, and I sincerely hope Natalis succeeds in salvaging it. Otherwise, the barons will tear the country into bits. अच्छा, ये जिंदा है भाई। कैसे जिंदा, वो अपन पूछेंगे। बढ़िया है भाई, तुम बताओ। अभिषेक भाई हम भी बढ़िया हैं, हम भी गेम खेल गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। How did you escape the burning castle? What are you doing in there? The last time we saw each other, you had locked yourself in a cellar full अच्छी of बात है भाई, ये जिंदा है। fire. I grew up wandering the nooks and corners of that fortress, Witcher. I know passages even the mice have not heard of. For a long time, a lot of people thought you were dead. Well, that would make 2 of us, am I right? Shouldn't you be in Vizima? I heard things got a bit chaotic after Foltest died. It might be a good time to try your luck, especially if you've got royal blood in the family. Clearly, you do not understand what will happen here, Geralt. The re-establishing of the Council and Conclave is but a pretext. The North's most important rulers have come here not to reconstruct some assembly of mages, but to seal the balance of power and establish spheres of influence. Only fools and cowards have remained at home. ओके, फेयरवेल। चल अच्छी बात है, तू जिंदा है, हम खुश हैं। ठीक, हाँ गेम खेलने दो तुम। थोड़े गारगोल मारने दो, तो हम गारगोल कॉन्टेक्ट कर रहे थे लास्ट टाइम। Even the Witcher, interesting. You think new council and conclave can survive longer than their nice city, isn't it? The previous council ended tragically. You think this one will fare any better? I certainly hope so. We'll start by implementing meticulous internal controls, peer reviews and such. You'll spy on each other? That's nothing new. It's necessary. Lack of oversight, that's what caused all the previous organization's failures. You mean it wasn't excess ambition and lust for power? Live and learn, I guess. Nice place. Has character, tradition. You're not bothered by all the blood that was shed here? Thaned was also built by the elves. I know Loch Muin's history. We will return it to its former glory. I'd like to see that. We're merely waiting for the treaty to be signed. The new council must act lawfully from the start. Lawfully sorceress, interesting. Magic's not exactly subject to human laws. The rulers might not believe your intentions are pure. This summit should convince them of that. Mages as royal advisors is an ancient tradition. They simply need us. And you need their gold.
along with a guarantee that they won't set the pyres burning again. Flea's inviting the dog to council, as I see it. The previous council ended tragically. You think this one will fare any better? I certainly hope so. We'll start by implementing meticulous internal controls, peer reviews and such. You'll spy on each other? That's nothing new. It's necessary. Lack of oversight, that's what caused all the previous organization's failures. You mean it wasn't excess ambition and lust for power? Live and learn, I guess. You. Your Excellency knows well that our hosts are libertines and eccentrics. My dear Councillor, Northern business should truly remain Northern. No extravagance Northern excuses reviews. Shillard's presence. Northern. Forgive me, Excellency, but I must disagree. Let us be realists. The Emperor would learn of every Locked है भाई ये gate भी. here anyway. Knowing that, our hosts have moved forward with their fame. Are you thirsty or hungry? Please, help yourself. Gladly. Gladly. ये फालतू चीजें बेचती हैं. ये लेने बैठे हैं हमें हैं. Greetings. Greetings. I don't अबे want sorcerer सी sorcerer. Day. greetings. क्या था दिन है? Greetings. Here to see the show. It's cancelled indefinitely. We're now in the services sector. What service do you provide? I was once a good swordsmith, or at least it looked like I might be. A riot came through, took my workshop with it, but the skill remained. I actually prefer swallowing swords to hammering them, but that upsets my wife. Give her my best. You can do so yourself. She's Alona, the bearded she-elf. Ah, and how's life with a bearded she-elf? Pretty normal. We don't generally bring our work home with us. ओके इसके साथ अपन एक क्राफ्ट कर सकते अपने लिए आए बट अपने पास हाँ अभी हैं एक ही ट्रैप बना यार Welcome. I'm Ilona, the bearded she-elf. Bearded? Don't be a child. We came here to perform, but this place is a circus in itself. Nobody's interested in us, so we're on to plan B. Trade. What do you sell? Food. Fresh. Very. You want to buy something, or are you waiting for my beard to grow out? show me your beard Fine, I'll bite. Show me your beard. I'll pay your full इसकी performance इसकी fee. beard तो That'll देखते be कैसी 200 दिखती orans. डील 200 ऑरेंज दे दो इसे पर इसकी बियर्ड तो देख के जानना है मुझे कैसी दिखती है Prepare for your final lesson. अबे Final? But you want to buy something, or are you waiting for my beard to grow out? ये है तो बियर्ड करो इसकी आउट है Bye. I'll have no discussion. Greetings. Greetings. Good day. Geralt of Rivia. Greetings. Geralt of Rivia Please, help yourself. Gladly कुछ काम के तुम देते नहीं हो Prepare for your final Greetings. lesson. Final. But आई थिंक एक मैजिकल सील है यहाँ पे ये हाँ अच्छे आना हुआ है यहाँ पे ये गार्गोल्स कॉन्ट्रैक्ट ही करना है ना अपने को पहले एक बार है ये लगाओ इग्नी लो Damn it! बच गया भाई बच गया ये लो और इग्नी कहाँ का भाई वो अरे बहुत बेकार टाइम पे मरा आई थिंक लास्ट गेम कहाँ सेव था
हाँ, एरियन लेवल एड से बात कर ली थी अपन ने ना। Witcher. ठीक है, चलो ये भी कर लिया था, बहुत लोगों से बात की थी, एक इससे भी कर ली थी। Witcher. बट से स्किप कर देते हैं सब चीजें अपन। It's you mean Your Excellency चलो, knows well that निकले our यहाँ से। hosts are libertines. ये बीएडेड सी एल्फ की अपन ने बीएड देख ही ली थी। Prepare for your final lesson. Final? But I'll have no... मैप कहाँ, कितना खुल गया मैप? ये रहा, यहाँ से जा पा रहा है ना इस तरफ ऐसे। अगर यहाँ कहीं पे था वो वाला, एक दूसरा वाला। ये तो मार्केट, तो ये तो पूरा मार्केट है, ये पूरा, ये और ये सब मार्केट ही तो है। इस जगह पे नहीं गया यार मैं जहाँ तक। क्या ये इन है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी चला गया। इग्नी से ही मारो उन्हें। गारगोल्स पे आई थिंक सिल्वर सॉर्ड लगेगी ना। आई थिंक ये कोइन वाला ही है भाई। कोइन साइन यूज करना है गारगोइल पे, देन इट बी अ गुड गेम ओवर। कल इस बार तो गेम मैंने सेव कर लिया। आई विल नेवर फॉल ये रहा अपना क्वीन। इतने सारे में ये बॉम्ब्स लेके रखा हूँ, ग्रेप्स और डांसिंग स्टार। इनमें से ड्रैगन्स ड्रीम तो यूज कर ही सकता हूँ मैं। गार्गल पे सिल्वर सॉर्ड ही लगेगी ना यार। एक स्टील क्यों उठा रहा है? सिल्वर निकालूं पहले, मतलब मैं। और ये ग्रेप सॉर्ड, ये डांसिंग स्टार सही रहेंगे। हाँ, ये रहा डांसिंग स्टार, ये रहा कोइन साइन, इग्नी साइन। अब निकाली ना इसने।
ये लो यहाँ पे। अब ये तो बहुत टफ होते जा रहे हैं। अभी तो पहले तो मैं बहुत आसानी से मार रहा था इनको, एक साथ आ रहे होंगे ना इस वजह से। जैसे पहले करता था ना वैसे ही करने दो। Wonder how many more will turn up. चलो ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे यार फीडिंग द gargoyle, ये बहुत टफ पड़ रहे हैं यार। तो भाई ये लो इग्नी। पोशन पी लेते भाई कोई सा, मैंने बनाए तो होगा पीटर्स फिलर। एक सालो रुक पी लेते एक। अरे रुक में चल जाएगा, इस सुपर नहीं होनी चाहिए ना अपनी।
टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। हेलियोट्रॉप साइन एकदम सा है, चार्ज ही होने वाला है। अरे ये 8 सही है फिर यार, आज नहीं मर रहा है ना। अब ये तो आते ही जा रहे हैं। चलो अब 8 का पता चल गया एटलीस्ट, बहुत जल्दी हो जाएगा। साइन वीकनेस पता रहे बस, कौन सा साइन से वीकनेस है। नाइस। यार एक आराम, इतने आराम से मर गए। ये रहा गार्गोल हार्ट। चलो भाई एटलीस्ट गेम सेव कर लूँ। यहाँ तीनों ऐसे देख रहे हैं ये। Medallion's vibrating. तो इसमें इसका अपने को कोड वगैरह ब्रेक करना होगा ना। 1 2 3 टोटल 4 साइन है यहाँ पे। कहाँ गई बुक? कौन सी? ये रही बुक। हाँ, तो ये 6th encrypted rune combination on the dark sky, the beauty of a falcon flight faster and faster. Okay. On the dark sky, the beauty of a falcon flight faster and faster. ठीक है, तो मैंने वो ली थी बुक। कहाँ गई ये वाली? गारगोइल्स, ये रून्स ऑफ पावर वाली। The rune of the rune of ability, the butterfly cross. ओके, इनमें से किसी अपने को सीक्वेंस पे कुछ करना होगा इसमें। पहले इसको ऑन द डार्क स्काई, उसके बाद क्या था? ब्यूटी ऑफ अ फॉल्कन फ्लाइट फास्ट एंड फास्टर। ब्यूटी ऑफ अ फॉल्कन फ्लाई, ये तो नहीं।
ये गलत था, सही कॉम्बिनेशन डालना होगा ना। सब एक साथ ड्रैग। अब आई थिंक हो जाना चाहिए। और ये नूरा यार, तो देखना पड़ेगा अच्छे से। बुक कहाँ, ये रही, रीन ऑफ पावर 4। ये कौन सी अपना 6 इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन। हाँ, वाह, एक ही बार में सर्च करने पे आ गया। विचर फैंडम पे देख लेते ना। टोटल कितनी, टोटल 6 ही है मतलब, है ना। ओके, तो इसका ऐसा है, स्काई, आर्ट, एनिमल एंड टाइम, यानी कि पहले ये वाला सिंबल, फिर ये ट्रायंगल वाला, फिर स्नेक वाला और फिर एक्स वाला। ठीक है, पहले ये वाला सिंबल, फिर ट्रायंगल वाला, फिर ये स्नेक वाला और ये रहा एक्स वाला। हाँ ठीक है, हो गया। इसमें मिली अपने को डायग्राम ऑफ एल्डन ट्राउजर और एल्डन डेथ करके कुछ। The Lord of the Wild Hunt desires the gene of the Elder Blood. He seeks to fling open the gates between the worlds so that terror and destruction may reign. The King of the Hunt ordered me slain, and the wraiths born of his command assumed living form, pursuing me through the voids between the worlds for centuries. I have arrived at Loch Muin. Though tired, I know I will not rest. The riders of the wild draw near. On my back, I can feel their deathly breath. अरे रे, तो अपने को ये मिली है शॉर्ड, सिल्वर शॉर्ड है ये भी। 45 से 50 का डैमेज है इसका। ये बढ़िया यार, एपिक है ये। 30, अच्छा अच्छा डेट विल। चलो इसको रखते, इस वाली को, इस वाली को अब क्या बैच बाजू देंगे अगर कहीं हो पाया। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। चलो, तो एक इनक्रिप्टेड रून तो अपन ने डीएक्टिवेट कर दी, 2 और करनी है गार्गोल कॉन्टैक्ट के लिए। लेकिन टोटल 6 हैं ऐसी रून्स, तो कुछ में शायद सीक्रेट्स वगैरह भी हों। 3 तो मुझे पता है, 3 कहाँ है बाकी 3 का मुझे नहीं पता यार, क्योंकि 2 अपन ने अभी देखी थी। कितना स्लो चल रहा है ये।
फुल चौड़ में। इसको बेच देंगे अपन। इन्हीं में ये सॉर्सरस का कुछ चल रहा है भाई। ये Please. लो ये ले, शॉर्ट खरीद ले। खुश रहना हो रहा है अब। फुलबोर्ड ट्रॉफी। यहाँ से जा तो सकते नहीं होंगे अपन। कहाँ गए थे लास्ट भी? ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड है। ये कौन सा झंडा है? नेल्फ गार्ड का है ना ये? नेल्फ गार्डियन ही है। यहाँ से भी नहीं जा सकते? क्या बात कर रहे हैं। चलो यहाँ से। ये भी लॉक्ड है, जो सब लॉक करके रखेंगे। Gargoyles contract. Prepare for your final lesson. Final? But So, even the Nilfgaardians have graced us with their ये भी शायद खुलता नहीं है वाला भी ना। He knows well that our hosts are libertines and eccentrics. My dear Counselor, northern business should truly remain. अरे एरियन लावा लेड, तुम यहाँ आप क्या कर रहे हैं? Forgive me, Excellency, but I must disagree. Let us be real. Constable John Natalis. Interex John Natalis. He is regent. He's a general, not a politician. I don't find it at all surprising. Affix. अरे यहाँ से तो हम वो मैन उधर जाएंगे। अभी इधर तो सर्च कर लेते छो में भी। अरे ऑरेंज क्लॉस का मैं क्या करूँगा यार? ये भी शायद हम यहाँ पे भी नहीं जा पाएंगे। नहीं चलो, जिसके साथ ये सिटी शायद हमने यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर लिया। ये एरिया बचा और एक ये एरिया बचा है। ठीक है, तो यहाँ अपन जो मुझे जगह और पता है मैं उन्हें उधर जाके और इनक्रिप्टेड र्यून्स कॉम्बोज जो हैं वो सब खोल खाली लेते हैं। सेव हो जाओ, लोडिंग टाइम लेगा। डेड लाइन का छोटा भाई। अरे यार, ये सोल्जर्स को और मारना पड़ेगा। अबे इसने और बुला लिए। तीन है टोटल, है ना? चलो निकलो निकलो यहाँ से। Hey, watch it! यहाँ नहीं जाना फिर से अब भाई, बेकार माहौल है वहाँ। अरे ये तो वो है लीफा की सीवर्स हैं ये।
Be damned. अरे हार पीस। नाइस। ये वाला फटेगा है ना। आखिर अरे क्या लेंगे यार, इतना भी अभी हमारे बहुत कुछ है। कहाँ था अपना वो इनक्रिप्टेड रीन कॉम्बो? जस्ट थोड़े आगे था। कैमेरिया के गार्ड नहीं देख पा रहा है अपने वो। अबे तुम्हें पिछली बार मार दिया था मैंने। ये फिर आ गए। चलो भाई, ये लौंडा कुछ नहीं रखा, ये फालतू मरा है एल्फ। अरे यू आर कैरिंग टू मच वेट हो गया। क्या फेंक एंड्रे का हाइड फेंक देते भाई, वैसे सबसे ज्यादा है वही। ग्रेप शॉट तो ना फेंकूं मैं, एलिमेंटल स्टोन फेंक दो, वो इतना कुछ काम का है भी नहीं। ठीक है, गोला मार दिया था, इस बार मत आना। चलो, ये कौन सा वाला था, ये कौन सा इनक्रिप्टेड है? फोर्थ इनक्रिप्टेड है ये, है ना? चलो फोर्थ वाले का बताओ मुझे। सिक्स कर लिया अपन ने, फोर्थ वाले का है ये ट्रायंगल स्नेक एक्स नहीं है, इसका है एनिमल टाइम आर्ट, इसका है एनिमल टाइम एंड आर्ट। कौन सा इसका है, कौन सा ये है, इसका है ये, इसका है ना एनिमल। ये रहा टाइम, सही है ना? टाइम गिनवाया, ये टाइम, हाँ ये टाइम, और ये कौन सा है? आर्ट। चलो ये वाली भी खुल गई। डायग्राम, डायग्राम मिला का है गाउंटलेट का, ट्राउज़र का मिला था पहले, फिर ये गाउंटलेट का मिल गया। इनका वेट भी बहुत कम रहता है यार, इनको बनवा लेंगे अपन। ठीक है,
गाउंटलेट और ट्राउज़र दोनों का मिल गया है ना। अब क्या बचा? गाउंटलेट, ट्राउज़र, आर्मर और ये आर्मर और बूट्स बचे। ये दो भी मिल जाएंगे। चलो 2 खोल दिए मैंने, है ना। एक अपना सील से यहाँ थी पीछे। साइड जहाँ से मैं आया था। ये माँ का How many more can there be? मेरा हेलियोट्रॉप साइन फुल वो हो गया। चलो एक ही बचा ये। और ये भी गया। नाइस। यू कैन नॉट सेव एट दिस पॉइंट बोल रहा है। जूलियट, ये कौन सा वाला है? ये सेकंड है। सेकंड और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बचा है अपना। एनिमल 8 टाइम्स का है। ये रहा एनिमल, ये रहा। तो 8 कौन सा है? ये रहा 8, वो रहा टाइम, और वो रहा इसका ये टाइम, एंड दिस इज का। बूट्स का भी अपने को मिल गया। देखो एक बूट्स के मिल गया, गाउंटलेट मिल गया और ट्राउज़र मिल गया। ये तीनों मिल गए। इंसेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, ये क्या है जो, ये कौन सा कोर्स खुल गया? देखो बूट्स, ट्राउज़र एंड गाउंटलेट्स, ये तीनों चीज़ मिल गई। आर्मर तो अपना ठीक है अभी, लॉक मोइन वाला। सिल्वर सॉर्ड भी ठीक है, और इसमें से जना था सॉर्ड भी ठीक ही है। निकलो यहाँ से। Oh, I used to say how I will never fall in love again until, यहाँ पे जाना है। इनक्रिप्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा लेकिन घूम के। यहाँ से कुछ नहीं है क्या? ये वाला एरिया तो ब्लॉक्ड ही है। अरे ये बाकी ये जगह कौन सी यार? ये फर्स्ट वाले कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट रून, क्योंकि मैप में देख लेते ना। ये यहाँ पर है एक ही वाली, तो चलो मैंने एक ये वाली भी मैंने तोड़ दी है 2। ये वाली
आई थिंक ये तीनों ये वही अपनी वाली जी बता रहे हैं जो अपन ने। ठीक है, ये साउथ ईस्ट वाली। हाँ ओके, टू एसेस दिस रूम गेराल्ट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम। शायद वो तीन ही हाथी हो, ऐसा हो। हाँ तीन ही आती है, चलो अभी तीन तो लेके जाते। हाँ कुछ है भाई ये। मुझे वीक सी लग रही थी ये वॉल। अरे अरे अरे, लोग इंतजार कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ये गेट खोला और अपन गए समझो। इस आराम आराम से जाना पड़ता है। गेम सेव्ड। ये गया कुत्ता। ये वैसे अपन ऐसे ही मार पा रहे हैं गेम में ही। डॉग को काट दिया मैंने। जिंदा। पशु पक्षियां भी नहीं छोड़ रहा मैं। नाइस। अरे अपना टैलेंट ट्री बड़ा होगा कि नहीं यार? Hey, watch it! देख अविनाश, पाप लगेगा मुझे है ना। इसकी लिंक गरुड़ पुराण में अलग से। I will never fall in love। अरे ये लौंडा आ गया ये। अरे भाई 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 रुक जा रुक जा। अरे अपन वो वाली शॉट रखें ना, इस कारण से डैमेज नहीं पहुंच रहा। सिल्वर रखें। सिल्वर इज फॉर मॉन्स्टर्स, स्टील इज फॉर ह्यूमंस। नहीं भाई ये नहीं करना, मेरे को पकड़ाना नहीं उनसे। गलत हो गए, गलत जगह।
An encrypted manuscript. ये साइड क्वेस्ट अपने होने ही वाले हैं बस, और मैन क्वेस्ट तो बहुत जल्दी निपटेंगे यार. ये शायद ये पढ़ लेगा मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना? No anything about gargoyles. I got rid of the gargoyles. Excellent. At last we can explore the hitherto inaccessible districts. And here's your reward. चलो, gargoyle contract completed. अब encrypted manuscript लो. I found a manuscript that might help. Interesting. This volume is sealed by ancient magic. Only highly valuable things get that kind of protection. Too true. Do you know how to unlock it? I'd need ingredients that can be obtained from certain monsters. Unfortunately, they don't occur around here. I'll need the pheromones of a Queen Endriga, the blood of a Necker warrior, and the brain of a Bulvor. We can substitute the tongue of a rot fiend for the harpy's egg. Quite a list. I'll see what I can find. चलो, आई थिंक अपने पास सब हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. अरे भाई बात कर ले यार, ये लड़की बात बीच में फालतू खड़ी हुई है. I've got all the ingredients you mentioned. Unbelievable. Give them to me. ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था यार. Right. Done. Let's see what's in the manuscript. By the gods. What did you find? Instructions. A description of how to forge the legendary sword known as Kerm. Kerm, अच्छा. The sword will be yours. You deserve it, Witcher. I will consider forging it an honor. Thanks. So long. कुछ मिला है अपने को. स्वॉर्ड दी है ना, कोई सी इनक्रेडिबल स्वॉर्ड करके उसने बोला था. हाँ बहन, मुझे तो कुछ नहीं मिला. अच्छा, इसका डायग्राम मिला है. डायग्राम के लिए 14 आयरन चाहिए, 2 टिम्बर चाहिए बस. क्या क्या चाहिए इसके लिए? ये देखो, 14 आयरन और 2 टिम्बर एंड हार्बी फेदर्स. आयरन और तो मेरे पास थी, मैंने बहुत फेंकी हैं. Yo. Leave the royal courts. Pour venom into rulers' ears no more. It's not too late to repay. Hey there. इसके पास होगी ना आयरन ओर्स. मैंने बहुत फेंक दिए भाई आयरन ओर्स तो. Welcome. Oh, it's a lovely day today. Gotta pay for looking too.
इसके पास भी नहीं है आयरन ओर्स तो। रुको, Leave me be! How are you? Prepare for your final ये इसके lesson. पास होगा शायद। Please. ग्लैडली नहीं वे किसी के पास नहीं, सब चूतिए। Final? But I'll have no discussion. अब भी इतनी फेंकी जबकि मैंने। चलो बूट्स मूट्स का भी तो मिला था कुछ। ये तो हम शायद बनवा सकते हैं। हाँ ये बनवा सकते हैं, ये गाउंटलेट्स भी बनवा सकते हैं और ये ट्राउजर्स भी फुल बनवा सकते हैं अपने पास। बस ये इसके लिए अपने को आयरन ओर चाहिए, 6-7 आयरन ओर चाहिए। टिम्बर तो अपन ले ही लेंगे। रुको एक काम करूँ मैं, उधर जा रहा हूँ, उधर से लेके आ सकते हैं अपन टिम्बर। चलो टिम्बर ले लो। इसके पास तो होगी नहीं। अरे उसके पास होगी ना, who'd have इसके पास। Yeah. It's a brazen लेट्स ट्रेड इसके पास भी नहीं है। जंक रखा है, जंक। Idiot! The audacity! Greetings. I don't want anything to do You're a with black social cats. outcast. And the Gotta bats. pay for looking too. Owl. चलो यहाँ पे यहीं से लेके आते आओ। ऑरेंज रखे हैं ये, वे बहुत ऑरेंज है यहाँ पे। ऑयल, एसेंस ऑफ वाटर के डायग्राम का क्या करूँगा मैं। लेदर है ये, ऑरेंज है। यार चलो यहीं चलते, यहाँ मिलेंगे अपने को आयरन ओर्स जितनी चाहिए। चलो एक मिल गई, 2 4 6। चलो अब देखते, हो गया। चलो हो गया। हाँ जाओ, जल्दी निपट गया, अच्छी बात है। Game saved. अरे बीच में एक और गेट था यार, वो किस चीज का था, देखते हैं। ये वाला
अरे भाई साहब कोई साइन लगाने दो। Damn, you're ugly. रुकसा है यहाँ पे इसमें अपन अभी इनको मारेंगे जरूर, लेकिन यहाँ कुछ मिलेगा तगड़ा। यहाँ इसमें अपन लगा देते, वो इन्हांसमेंट कहाँ गया? हैंग्समैन वेनम, वो स्पेक्टर सॉइल। और फाल्कास ब्लड क्या करता है? स्पेक्टर सॉइल लगा देते सिल्वर में। अपग्रेडेड आइटम। ये ब्रुक्सा है ना, ये गेन ऑफ ट्रूथ वाले चैप्टर की। जो इस बार सबको मार दिया था मैं। थोड़ा जल्दी अटैक कर, थोड़ा सा करके करेंगे। गेन ऑफ ट्रूथ। इग्नी पीछे हो जा, पीछे पीछे पीछे। कंट्रोल चिपक जाते हैं, क्या होता है इसमें? मर गए ना सब। रेजोनेटिंग क्रिस्टल्स। अबे नहीं भाई, इन पे बिल्कुल हमला नहीं करना। ये क्रिस्टल कुछ होंगे भाई, कुछ। यही तो हेल्थ खा रहे थे ना, यही क्रिस्टल्स।
मेरे को लगा कुछ खास मिलेगा कुछ, ये तो फालतू है। चलो 1 मिनट बाद अपना आर्ट साइन खुलेगा। वाह, 1 मिनट तक क्या करें, इसको ऐसे ही मारो। अबे ये लम्बा ही है कुछ ये। एक मिनट 19 सेकंड। भाई निकलो यार, हो गया। एक तो इसमें भी अपनी वो नहीं जा रही की। तो थोड़ी सी वो ले लेते, हेलियोड्रॉप्स। टू से भाई साहब, बन। अब ठीक है। अरे वाह, ये नहीं टूट रहा। चलो ठीक है, हो गया हो गया भाई। चलो अब इनसे सब बनवा लेते हैं। क्राफ्ट मी एन आइटम सबसे पहले बनवाते हैं। यही वाली शॉर्ट थी ना, ये नहीं थी यार। रुक जा। Jackass! हाँ यही थी। 50 से 55 कितना डैमेज है इसका? इसका वेट भी कम ही है। 50 से 58 का। आइटम कंप्लीटेड। और ये बूट्स बनवा लेते। एक बूट बन गया, एक गाउंटलेट बन गया। ट्राउजर के लिए एक लेदर चाहिए, तो लेदर इसी से ले लेते ना। लेदर 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 तो हर कोई दे देता है यार, यही रखा रहता है। लेदर है तेरे पास? लेदर, हाँ ये रहा। एक चाहिए बस, ठीक है। और ट्राउजर इसी से बनवा लेते, पुराना मित्र है अपना ट्राउजर। अबे अभी भी एक और चाहिए, रुक जा, थोड़ा एक और दे दे। ले लेदर नहीं ना, Renounce magic. ये दूसरा लेदर चाहिए।
अच्छा हार्डन लेदर चाहिए, हार्डन लेदर बना, पहले हार्डन लेदर बनवाना पड़ेगा। हार्डन लेदर, लेदर लॉन्ग, ताल कारपेंटर, रुक जा। हार्डन लेदर का पहले वो खरीदना पड़ेगा, डायग्राम। Turn away the black cat and the bat. ये +23 वाला आर्मर है ये। तिरना लिया +23, वाह। तिरना लिया। अबे हार्डन लेदर तो बेचता होगा कोई, डायग्राम बेचता होगा। अपने कौन सा वाला आर्मर है? +18 वाला है। चलो पहले तो ये पहन लो गाउंटलेट्स, ये बूट्स पहन लो। अबे हाँ ये वेट इसका 3, इसका 2 है, +2 +1। और ये वाली स्टील शॉर्ट रख लो, केरमी। 50 से 58 का डैमेज है इसका, और इसका 45 से 50 है। चलो बहुत तगड़ी मिल गई अपने को। प्रिंसेस जनेता शॉर्ट इसको बेच दो, ले। एल्विन गाउंटलेट, एल्डर ब्लड गाउंटलेट्स, ट्राउजर। चलो सुपर लेदर ढूंढ के आते हैं। कौन है? विकेट है, बिल्ली भी है भाई इस गेम में। Constable John Natale. Greetings. Are you अबे ये फालतू चीजें नहीं चाहिए हमें। So, even the Nilf with their presence. Your Excellency knows well that our hosts are liberty. Greetings. I Give her my best. ये रखा होगा शायद हार्डन लेदर। हाँ ये किए है भाई। भाई चलो इसी से क्राफ्ट उससे करवाएंगे। The absence of certain people is telling. The absence of others. रिलीफ मिला, रिलीफ। ओइच क्राफ्ट मी एन आइटम। ट्राउजर क्राफ्ट कर दे एक मेरे लिए, ठीक है। ट्राइग्राम, चलो अभी इसको बेच सकते हैं अपन कुछ कुछ चीज़। सबसे पहले मैं डायग्राम बेच दे रहा हूँ। इसका ले ले तू, ये मतलब ये ले ले तू। एल्डर ब्लड, संतरे का
लॉन्ग रोबस्ट गाउंटलेट ये ले ले, ये भी ले ले, रोबस्ट क्लॉथ भी ले ले, ब्राउन वाला ये सब, मतलब ये काम की चीज़ें हैं। ये हो गया। एल्विन ग्लाउंटर ले ले तू, एल्डर ब्लड नहीं दे सकते तेजे, एल्डर ब्लड वाले को चेंज करो। अब ठीक है, ट्रॉफी कौन सी रख लूँ यार मैं? गारगोल ट्रॉफी अच्छी है, +7 का वो है इसका। हाँ, वेट भी कम है और इसका ना, ऐसे हिसाब से तो फिर ये वाली सबसे सही बोलो ट्रॉफी। और ये सारी बेच देते हैं। ओए ले, जगह बहुत घेर रहे थे। ओके चलो ये हो गया भाई। अब अपना देखो सब सेट है एकदम। स्टील स्वॉर्ड मिल गई 2, एक मिल गई सिल्वर स्वॉर्ड अच्छी वाली, इससे अच्छी नहीं होगी मेरे हिसाब से। एडन दीत 50, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। आर्मर थोड़ा अच्छा मिल सकता है वैसे एक, और मैं कुछ इंचांट कर ले रहा हूँ एक काम करते। अच्छी रून कौन सी इनमें से? मून रून, चलो एक मून रून इसमें लगाते, एक फायर रून इसमें लगाते। ये बन गई मस्त। एक यसी ग्रथ रून, डैमेज +7 करती है। एक मून रून इसमें लगाते, एक नून भी लगा देते इसमें, और एक ये लगा देते, ये सीधे थ्रू। चलो भाई अब बन गया अपन एकदम रेडी। अब देखो, अब देखते इसका डैमेज कितना हो गया। 51 से 56 हो गया, इसका 61 हो। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता अब। Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! Break your wands and burn your अब अपन करने चलते हैं मेन मिशन। तो मेन मिशन कहाँ है? ये वाले इतनी देर से अपन फालतू वेर इज फॉर अ हायर कॉस्ट, ये दोनों में तो कुछ है ही नहीं। फिलिप आइल हार्ट को पास चलते, जेल में होगी वो। उससे पहले एक बार देख लेते कि यहाँ पर मेडिटेट वगैरह कर सकते हैं क्या। एक टैलेंट मिला अपने को। कुछ पोशन मोशन पी लेते भाई, बीच में बहुत लोग मिलेंगे। एक पीटर्स फिलर पी लेते, एक रुक पी लेते और एंटर करते। चलो At your service. यहाँ से जाना है अपने को। मैं भी गलत जा रहा था यहाँ से। ये जगह है लाट वाली लखमोइन।
ये लो। फूटेगा वे। अरे 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 यहाँ से तो बनने। हाँ यहीं जाना होगा। आजा। ये घुल फैमिली का है ना ये फायर रूल में ना आग लगती है, इसलिए इसी वजह से इसमें फायर रूल लगा दिया अपन ने। हल्का हल्का इंसान जलने लगता है। Nice. How's the things? ठीक है। ये रहा। बचा रहना वे तू। नाइस। अभी और हैं क्या यहाँ पे? एक सेकंड। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं। चलो निकले यहाँ से। चलो एक सेकंड रुकना। हेलो
ऑल राइट। ड्रेगास इस साइड आने का। यहाँ अब तो सीधा सीधा रास्ता दिख भी रहा है। डिसेंट। अपन वो वाला रास्ता भी अपना पा रहे थे, वो गार्ड से पकड़ाने वाला, बट वो मेरे हिसाब से बहुत इजी हो जाता है यार, अपना सामान भी जाता है उसमें सब। लॉक्ड है ये। यहाँ पे है फिलिपा आइल हार्ट। हम यहाँ आ चुके क्या? ये बंद है अभी। चलो ये रही अपनी फिलिपा आइल हार्ट। with 3 channel guardian Your soldier. Majesty. I've waited long for this meeting. You left Redania so suddenly I had no chance to give you the send-off you so richly deserved. Your Majesty, I fail to understand why I have been arrested. I've done nothing but serve Redania's interests, supporting the rebellion, undermining Henselt, risking my own reputation on your behalf. I'm no longer the little boy who believed your every word. Why do you do this, Radovid? I was there at your most trying hours. Without me, you would not be the man you are. I don't understand. You understand very well. You conspired against my father Vizimir, and against me. The entire Redanian court once trembled in fear of Philippa Eilhart. Untrue, sire. You must let me explain. What are your charges, Your Majesty? Ambassador. Triss Marigold was kind enough to compile a list of persons making up the secret society known as the Lodge of Sorceresses. Some Nilfgaardian sorceresses were members as well, but you need not be bothered with them, my lady. इसको पता चल गया कि Lodge of Sorcerer का plan. You're mad! The Lodge ordered Demoven killed. It ordered Foltest killed. I suspect you played a part in my father's death. And if I released you from the Dimeritium, you'd kill me too. You're finished, Eilhart. There will be a trial, due process, everything as it should be. But know that you shall not wriggle out of this. You shall be convicted of conspiracy, treason, and regicide. They'll rip your flesh from you in bits before they burn you at the stake. Throughout my childhood, I felt your cold stare on the back of my neck. When I issued orders, my subjects would search with their eyes for Philippa Eilhart's gesture of consent. The entire court at Tretogor looked on as you humiliated me. All Redania laughed behind my back. You taught me to look everyone in the eye. Forced them to lower their gaze, do you remember? A king must never show weakness, uncertainty, you said. I've mastered that skill. Yet there is one I could never force to submit. You. You've one chance to shorten your suffering. Admit to everything, here and now in the ambassador's presence. Look me in the eye and repent. Submit. As you wish. Torturer, put out those vile eyes. You're making a grave error, sire. अब इसकी आँख निकाल लेगे भाई ये। फिर वो लुक आएगा इसका, वो पट्टी वाला। Pain. We will talk again, witch. The Philippa Eilhart problem has been बेचारी की आँखें ही resolved. निकाल दी। We must return to camp. Wait here, Excellency. We'll scout ahead. ये कहाँ जा रहा है भाई?
ये यूज करते ना अपनी। ये अपनी फायर रूम फुल जल रहे हैं फायर रूम के। बेटा ये आखिरी बचा है बस। आयरन रिंग बट वो सॉसरर है, लेकिन ऐसे तो अपने को जाने नहीं देगा, मारेगा तो बुरा। अरे नहीं, हो गया इजी पीजी। You're not easy to find. Look what they did to me. Radovid. To think I taught him magic tricks when he was just a boy. Free me, Geralt. I have to get out of here. Do you hear me? Help me. You'll answer a few questions first. Is what Shillard said true? Was Shillard telling the truth about the lodge, the assassinations? He said exactly what Radovid wanted to hear. Half-truths, musings stripped of context, which differ very little from lies. Did Triss take part in all this? She's clean in those terms. चलो Triss Innocent clean है, as a अच्छी बात है। child, but only to a point. I assure you, she has not been honest with you about many other matters. Why did all this happen? Murdering monarchs, what interests did it serve? I can't fathom. Help me get out of here and I'll explain all and lift the spell from Saskia. Take these shackles off me and lead me to my house. I beg you. I'll tell you everything. Everything. Triss को भी I think वो उधर ले गए ना? Okay. I didn't track you alone. Yorvith can't wait to see you again. Triss के पास जा रहा है ना वो My death will Radovid of change little. Redania। Yorvith and all like him have no right to judge others. How does the spell work? How does the spell work? Saskia's will and mine are one. She cannot resist me. But fear not. There's no suffering involved. She merely believes me to be the most wonderful person in the world. As if she were in love. You know what's most beautiful? In spite of all this, she seems unchanged. She's retained her charm, her valor, her honor. अरे गजब। Where's Saskia? When I was arrested, she was with Sheila. They must be on their way to the deliberations by now. इनका प्लान तो इसने बताया ही नहीं। Clock's ticking. Time is of the essence. Why do you do this? Would you take vengeance on a blind woman? Shillard said they've got Triss. I have to free her before they put out her eyes too. Going to the Nilfgaardian camp is suicide. And leaving a friend is villainy. Only I know how to break the spell that holds Saskia. Get me out of here. If I die, she'll remain forever spellbound. All right, अभी हमारे पास दो चॉइस है। सिलार्ड जो है निल्फगार्डियन एम्परर जो काउंसिल जो भी बोलते हैं ना, तो वो उसने रेडोवेड ऑफ रेडिनिया से कुछ बोल दिया है लॉज ऑफ सॉसरसेस के बारे में कि सब किंग्स को मरवा रहे हैं, तो वो हर एक सॉसरस को मार रहा है। इसी चक्कर में शायद सिलार्ड ने उस निल्फगार्डियन सॉसरस को भी मार दिया। तो एक्ट 3 की स्टार्टिंग में उसकी आँख निकलवा ली और अब वो ट्रिस के पास जा रहे हैं। तो ट्रिस को निल्फगार्डियन कैम्प में करके रखा है, जहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत है। ट्रिस देखो भाई, ट्रिस का तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है, उसकी गलती नहीं है, तो शायद उसे वो छोड़ दे रेडोवेड ऑफ रेडिनिया। उसकी बहुत हेल्प भी करी है, ट्रिस की भी करी है। अभी हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम ट्रिस को जाके बचा सकते हैं या फिर हम इसको बचा लें और सास्किया का स्पेल लिफ्ट करवा लें। तो ट्रिस को तो भाई ट्रिस तो बच भी सकती है आई थिंक, लेकिन इसको बचाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसको नहीं बचाया ना तो फिर सास्किया का स्पेल जो है वो लिफ्ट नहीं करेगी।
मेरे हिसाब से यही चॉइस सही रहेगी। अभी अपने को मतलब उससे नहीं सोचना है, क्या कहते हैं उसे, और नहीं होगी, ठीक है। So you lived us well from Saskia. All right, but if you're lying to me... Unbind me and lead the way. We must return through the sewers. The shackles stay on, and you'll go first. Shillard will raise the alarm. No, he won't. We'll be long gone by the time he comes to. Kill him. I'm not into murdering unconscious old men. Lead on. Shillard को मार सकते थे लेकिन क्योंकि unconscious है। I want to get out of here, and I want to live. Can you walk? Sure you won't faint on me? I'll manage. Will you remove my shackles? The manacles stay on. Lead Philip Eilhart to her quarter. That gun came. चलो योरविथ अपनी मदद करने आ गया फाइनली। Who did this to her? It was Radovid's way of thanking her for the care she provided him when he was a child. I saw him with his army on his way to the talks, whistling a tune. Get me out of here! Shut up, witch! You're alive only because you're still needed. Philippa's promised to help us in exchange for her freedom. And you believe her? Know a better way to free Saskia? Can you walk, Eilhart? Got the strength to walk, Eilhart? I must find it. What state is Saskia in now? I've ordered her to carry out Sheila's bidding until I return. Great. And Sheila will be at the talks? Yes. She's probably there already, making certain the Lodge's plans do not fall through. Okay. You used me too. What would you have done if Saskia hadn't been poisoned? If a certain foolish witcher hadn't gathered the potion ingredients? I would have sought other means, but I couldn't miss that opportunity. What are the Lodge's plans? Did you order Foltest killed? No, What's Sheila supposed to safeguard? The restitution of the Council and Conclave, and the creation of a strong, independent state with Saskia as its leader. With what aim? As a bulwark. A defense against Nilfgaard. After years of chaos and destruction, the time has come to build. We wish to rule, yes. Where is the fault in that? Everyone wants to rule. And I know how to do that. Better than any other monarch in this city. You can't hope to win the common folk's trust. Humans will never accept a sorceress queen. Non-humans won't either, given what that old hag Finderbear has achieved. They all believe in Saskia. They all trust her. The girl is a born leader, yet she has no political instincts. She's charismatic but not cunning. Courageous but not fierce. She is just but lacks the required cruelty. She is your very opposite. Perhaps. Together we would be unstoppable. हेलो भाई, कैसे हो आप? बढ़िया हैं भाई। ठीक है, तो अभी बेसिकली लॉज ऑफ सॉर्सरर्स का प्लान ऐसा था कि पूरे नॉर्थ को एक ही किंगडम बनाना चाह रहे थे, पूरे नॉर्थ को, ताकि निल्फगार्ड के खिलाफ उनको हरा सकें, क्योंकि निल्फगार्ड मतलब बहुत मतलब उस सभी पे राज करना चाह रहा है। उसकी भी वो ये एक बैटल ऑफ ब्रेना वगैरह इन सब में वो हार गया, लेकिन निल्फगार्ड रुक नहीं रहा, तो एक ही किंगडम बनाना चाहते थे। और सास्किया की नीड इसमें थी उन्हें एज अ लीडर, क्योंकि विचेस पे तो कोई ट्रस्ट करता नहीं है ना। ठीक है, डिड यू ऑर्डर Foltest killed? Did you order Foltest murdered? No! Shillard claimed that Triss testified. Triss doesn't know what she's talking about. The Lodge exists, and Triss has lost our trust. All that is true. But Foltest's assassination? That was not my order. अच्छा, Foltest को इनने नहीं मरवाया, फिर किसने मरवाया? How do we free Saskia? I have charmed a dagger with a counterspell. You must thrust it into the she-dragon's heart. You mean your heart, witch? Do you mock us? There is no other way. She must be struck with surgical precision.
Otherwise, the counterspell won't work. All the blade's runes must touch blood, and its point must pierce a chamber of her heart. We'll need to hold her down somehow. Hold down a dragon? This is ridiculous. She's lying, Geralt. I don't trust her. Why would she even need this dagger? In a minute we'll hear that she planned to free Saskia herself. Any time you cast a spell or a curse, you must have a counterspell at the ready. It's a basic rule of magic. I prepared the dagger just before I cast the spell, in case anything went awry. A basic rule, but I don't know many mages who follow it. Where's the dagger? My quarters. In Geoffrey Monk's former home, inside a well-secured chest. I know the house. Let's go. Yorvith, know any way to get to Philippa's quarters unnoticed? Through this sewer. We may encounter monsters, but we'll gain a lot of time. Keep an eye on her. I'll go ahead. चलो, तो हमें अगर अभी सास्किया का कर्स वो स्पेल लिफ्ट करना है, उसके लिए उसका डैगर चाहिए जो कि काउंटर स्पेल रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिलिपा आइलैंड के क्वार्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, खैर अभी तो इसको ले जाना पड़ेगा हमें। तो रुक जा भाई। भाई एग्जाम पूरे हो गए क्या? अरे नहीं भाई, कल ही एग्जाम है हमारा। कल साइबर सिक्योरिटी का है, बट हम यहाँ गेम खेल रहे हैं। 17 को कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन दिन भर यही काम है अपने को, तो 1-2 घंटे छोड़ के ऑब्वियसली। अरे आपके भी चल रहे थे ना ब्रो? कोई साइन लगा लेते भाई। अरे बहन जो रुक जा। ये नहीं मानेगा। बच गए। What guarantee do I have that you'll set me free? No guarantee. If your dagger fails to work, or Saskia perishes from the blow, you'll be next. चलो पोशन पी लेते भाई, इतने सारे पोशन बना के रखे थे मैंने इसी दिन के लिए। हाँ भाई, हमारे अभी वाइवा शुरू होंगे 15 से, बाद में एग्जाम होंगे। अच्छा 15 से वाइवा हैं। चलो भाई बढ़िया, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करना, हमारे जैसा मत करना तो भाई। भाई साहब चलो आओ, इसको लेके चलते। मैंने सारे साइड मिशन कर लिए इस चैप्टर के, अब वैसे मेन ही बचे हैं, तो सीधा चलना है अपने को। अरे भाई तू चलो, इस वाले को मार दिया। ये हेलियोट्रॉप साइन भाई अलग ही बात है यार इसकी कुछ। चलो सारे मर गए, कौन बचा है? कोई नहीं। Slow down. I can't keep up this pace. The
sooner you give us the dagger, the sooner you can lick your wounds, bitch. Pain-killing spells require focus and precision. I cannot manage one now. Die from the pain, then. No one will help you, nor weep for you. Keep moving. चलो. Geralt, you'd best check the room before we enter. I don't like this. Neither do I. वो बहनचोद गार्गोइल. बच गए. गार्गोइल का के लिए रख लिया था इस. अबे तो दो चार गार्गोइल हैं इसका. अरे कल भाई मैं कॉलेज आ रहा था तो बस में था इसलिए कल नहीं देख पाया. कोई नहीं, बाद में देख लूँगा. अरे कोई नहीं भाई, इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है. देखना आएगा ये तो. ये आज देखता है वही बड़ी बात है. कहाँ था मैं? संडे को पुरानी देख रहा था भाई. बाकी थी जो वहाँ फ्लॉटसम की इनमें नीचे तो काफ़ी कंटेंट है. अरे कंटेंट वही तो, इनमें बहुत कंटेंट है. अभी आप कल वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी मतलब कंटेंट एकदम कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत हुआ है कल वाली वीडियो में. वेरी इंपॉर्टेंट कल वाली वीडियो. अरे हैंग मत होना इस टाइम पे. ऑल राइट, अब सेव कर लूँगा. गेम सेव्ड. Pain-killing spells require focus and precision. I cannot manage one now. Die from the pain, then. Rest assured, no one will help you, nor weep for you. Keep moving. Geralt, you'd best check the room before we enter. I don't like this. Neither do I. मैं ऐसे ही घुस गया था ना गार्गोइल्स को मारने. वो नहीं करना अपने को. एक एक गार्गोइल्स को लेके आऊंगा. ऐसे आ जाओ एक. चलो एक वो बचा है. ऑल राइट, सब सेफ है. आ जाओ. Unshackle me. Remove the dimeritium. I can help you. Shut up. डायमेरिटेरियम की वो पहनी है ना अपनी, जो फिलिपाइल हार्ट्स के नोट्स से सब ले लाऊं मैं.
बेसिकली डाइमेरिटिनियम की अगर हथकड़ी पहना दो मैजिशियंस को, जो भी रहते सॉर्सरेसेस को, तो वो अपना जादू यूज नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। ठीक है। हाँ भाई, साइन भी काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। हाँ साइन अपने वो स्लो मोशन वाला हिलियोटर ऑफ साइन। द अर्थ एलिमेंट इज द यंगर ब्रदर ऑफ द लेजेंडरी डाओ द जेनिक केपेबल ऑफ। हो गया। ये क्या है भाई, ये क्या है? लीपाइल हार्ट्स के नोट्स हैं ये। ड्रैगन स्केल ये क्या है भाई? इससे शायद अपन कुछ बना सकते, ड्रैगन स्केल्स। लीपाइल हार्ट के क्वार्टर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रुको। I'll be making land one day. चलो आ गए भाई। All right. Is this the chest? Describe it. It's heavy, covered in runes. There's a circle and candles on the floor. Yes, the very chest in which Geoffrey Monk kept his most valuable treasures. The dagger's inside. How do we bloody open it? The candles must be lit in a specific order. I figured it out. My notes are downstairs. चलो मैं नोट्स लेके आ गया, अच्छी बात है। है। A simple spell will suffice. Remove my shackles. Geralt, do you know this ritual? Only a mage can perform it. Shut up! I'll light the candles, then we'll remove the dimeridium. Break the code to unlock the chest, the dagger. को स्पेसिफिक ऑर्डर में बोल रही थी वो, रुको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसा कुछ करना है ना? नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पहले ऐसा। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये लास्ट था। They went out. गलत है ये। वही मैंने कहा कि शुरू में उसको जला दिया था ना, फिर से देखते हैं। पहले ऐसा करना है, पूरा क्लॉक वाइज जाना है, उसके बाद डायगोनली। पहले क्लॉक वाइज चलते हैं, जाओ। देख लूँ मैं चेस्ट कहाँ है। ये है चेस्ट ना। चेस्ट कौन सी साइड मानूं मैं? यहाँ खड़े होके सब किस हिसाब से, मतलब चलो यहीं खड़े होके चलते आओ। 1 2 3 चौथा, लास्ट वन। आई थिंक एक तो हो गया होगा। Now unshackle me. I'll open the chest with a spell. Neither of us can utter it. It's not something you learn in a moment. A trained mage is needed to cast spells. अरे मैं तो यहीं के यहीं कैद हो गया ये। Need to hurry. Do as I say before I lose consciousness. Try anything clever and you will die. Okay. भागेगी ये, मेरे को भरोसा नहीं है। You can lift the spell binding her, but she will never be human. She's more than a dwarf. Someone who restored hope to the Enshay. She's a monster. If you think she can rule a realm of humans and elves herself. Face it, Delian! You'll suffer the consequences of your foolishness. Look out, Geralt! आर्ट का यूज कर लिया इसने भी, वाह।
अरे 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 धोखेबाज गोलम भैंचोद। ये कहाँ पहुंच गए भाई हम? You're on your own. I can't help you. अरे इसको तो मैं हरा दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। बच गया मैं। आई थिंक ये इग्नी वाला बंदा है थोड़ा। You're on your own. I can't help you. गोलम्स बहुत आया यार इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा ही। लास्ट अभी तक एक ही गोलम, इससे पहले सिर्फ एक ही गोलम अपन ने मारा था, वो भी वो एकदम छुपा था, दिख भी नहीं रहा था। दिख गया वो तो पता नहीं कैसे। इजी था ये तो। अरे नहीं 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 कंट्रोल। अरे यार लास्ट मोमेंट है, जल्दबाजी कर दी मैंने, कहा मैं देख ही नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि गोला में वो एक दो बार मरते नहीं तो मज़ा नहीं आता। Bloody barrier! I can't penetrate it. कोई बात नहीं। Let us come. Nice. You're on your own. I can't help you. ये रहा इग्नी। Look out! Bloody barrier! I can't penetrate it! गया और क्या? नाइस। इजी था। Amazing fight, Gwynblade! अरे Get the थैंक यू। dagger and let's get out of here! थैंक यू यूर विथ। तूने तारीफ कर दी, वही बड़ी बात है। फिलिपा हार्ट्स डैगर। चलो ये ले लिया अपन ने ड्रैगर, गेम सेव कर लिया। चलो चलते आओ। Let's hope this blade will do the trick. A strange weapon. Never seen anything like it. I hope it works. Too bad Eilhart won't tell us anything more. Philippa fled. She shared her last. There is the rest of the lodge to. Keep in mind that the other sorceresses are here. Philippa may inform Sheila. Or command the dragon. I won't be surprised if I'm forced to fight Saskia. Confused by spells, she won't understand we want to help her. You're probably right. But please don't kill her. Unless you must do so to save your own life. नहीं ये हम ड्रैगन को बचाएंगे भाई, ऐसे मारेंगे थोड़ी उसे। योवित कैसी बातें करता है। Philippa will be far away by now. She was in pain. Let's hope that kept her honest.
She's bound to recover quickly and promptly return to conspiring. She's out of the game for now. The monarch and mages won't wait. Let's go join the war. Time to join the talks. I'll go ahead and see what we can expect. Chalo guys. Okay. Spell breaker. Find your way to enter before them. Spell. एक आखिरी क्वेस्ट बचा है ये वाला. Summit of Mages. ठीक है, हमें योरवेस से जाके बात करनी पड़ेगी उसके लिए. योरवेस मिलेगा हमें यहाँ पर. ओके. फिलिपा आइला ड्रैगर. ये क्या है फिलिपा? इससे अगर हम मारेंगे तो उसका स्पेल हट जाएगा ना. अरे क्या खोल रहा हूँ मैं बार बार. हाँ भाई, ड्रैगन को सीरीज में भी बचाया था. हाँ वही तो, ड्रैगन ऐसे थोड़ी मार देंगे यार. ठीक है, तो ये आई थिंक ये लास्ट क्वेस्ट है गेम का, जहाँ तक मेरे को लगता है. ये गेम मतलब एंड पे है. सारे सीक्रेट रिव्यूज वगैरह हो ही चुके हैं. देखो यहाँ पे एनहेंसमेंट्स बचे हैं कुछ कुछ. Temerian Special Forces Cockade. मुझे यहाँ से बाहर कैसे जाए आप हमें ये बताओ. मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार. अच्छा यहाँ पे अभी तक अपन ने यहाँ पे एक ही वो यूज़ किया है ना. इसके नोट्स तो कुछ अजीब ही थे यार. ये इसके नोट्स में तो ये सब भी बना था. ये कुछ कुछ ही 1 2 3 4 5 1. क्या पता भाई, ये होगा कुछ. ये 3 शायद पॉसिबिलिटी उसने बताई हो कि ऐसे ऐसा तुम कर सकते हो. ये वाला गेट खुल जाएगा शायद. ओके खुल गया. अरे ये था फिलिपा का क्वार्टर. Renounce magic, I tell you. Shatter your towers and crystal balls. Ben of Ben Arts. Let's straight. आर्मर ऑफ त्रिनालिर. इस 23 है इसकी भाई. वो आर्मर ऑफ त्रिनालिर की डैमेज वाला वो. ये किस काम में आ सकता है ड्रैगन का ही. अरे बहन जो बेच दिया मैंने क्या इसको. वापस दे दे. वो कुछ काम में आ सकता है. गेम सेव करो. Turn away the black cat. एक बार इनसे आखिरी बार मिलते चलते. Heart drop. And the bat, the owl, and the rat.
अपना आर्मर को थोड़ा अपग्रेड कर लेते, एक काम करते, ये यूज़ करते इसमें। यस 20 हो गई इसकी। मैजिक रैप नहीं करेंगे अपन, वो एक वो था ना कोई सा फाइबर वाला। डॉर्वर इनहांसमेंट, नेक्रोफेजियन, सेक्टर सर्कल, ये सारे और भी थे यार, तो गायब हो गए होंगे। चलो ठीक है, एक काम करते, रहने देते। ये शायद लगा पा रहे हैं क्या? नॉट अलाउड। कुछ भी कर रहा हूँ मैं, कुछ भी। मैजिक रैप ये भी लगा दूँ और एक स्टील प्लेटेड लगा दूँ। चलो हो गया। हमें बुलाया है उसने। ये कौन है? In a hurry to see the deliberations. Here on urgent business. Your dress seems to confirm it. Excuse you indeed. I suppose I couldn't much care. I've heard what I came to hear. And what, pray tell, was that? The rightful heir will ascend to the Adernian throne. There will be peace in the land. What more could one want? Prince Stennis is here? Prince Stennis bhi aaya hai. Crowned 2 days past in Vengerberg. Merely send a messenger here. All those present promptly agreed that he will make a good ruler. He will make a good ruler. Prince Stennis ko to... Prince Stennis. A poisoner, coward, and schemer. He trembled with disgust when he spoke to the peasants. Disdain flowed from him like vomit. But he didn't deserve to be lynched. That was not the justice Saskia fought for. Prince Stennis I, son of Demavend III, became the 17th king of Aedirn. He won the hearts of the people. They saw him as the hope of the nation. The realm, ravaged by war, needed a ruler sensitive to the plight of his subjects. King Stennis I was just that. बस उसने पॉइजन करने की कोशिश की थी सास्किया को, अदरवाइज तो सब ठीक था स्टेनिस का। ये एरियल लावा लैडी है, जिंदा बच के निकल गया था। अंश तो है। कहाँ से जा रहा हूँ? अरे एरियन तू चल रहा है हमारे साथ? नहीं जाएगा ये। एटलीस्ट वो जिंदा है, वो ही अच्छी बात है। I see you took care of the guards. I hate those monastic curs. They're not paragons of virtue, true, but they were just doing their job. Then they didn't do it well enough. Can we go now? Okay. Yeah, yes, let's go. Time to finish it. और इसी के साथ भाई गेम सेव्ड। Whether you like it or not, John Natalis, King Hansel, Temeria will be divided. For the good of the entire North. The united forces of Kedwin and Redania will end the fighting among the elder houses and secure peace from Gorsvelen to Ellender. At present, Temeria is starting to resemble the Pontar Valley. Which, if I understand correctly, is currently controlled by Aedirn. You are mistaken, Radovid. Vergen is free. Free? What precisely does that mean? Lawmark is not Kedwin's, and Aedirn no longer controls Upper Aedirn. We have rejected Prince Stennis. King Stennis? And handed King Henselt's army a resounding defeat. Your forces, my dear lass, are nothing but a motley array of rebellious peasants and elven brigands. Sooner or later they will need to swear allegiance to someone, or they will be defeated and dispersed.
The peoples of the Pontar Valley will swear allegiance to me, Queen Saskia. As an independent realm, we hereby speak in favor of reconstituting the Council and Conclave. You're a lovely girl, but you issue from common stock. The sole crown you are worthy of donning is a wreath woven of wildflowers. Redania will recognize no other coronation. In that case, you must choose, King Radovid. Will you carve up Temeria, or march on the Pontar Valley? Henselt, last of the line of the unicorns, has sworn to recognize the Pontar Valley as a free realm. Philippa Eilhart witnessed it. Philippa Eilhart is in my dungeon, awaiting trial for treason. She was in your dungeon, Radovid, but is no longer. She will sit at my side in Vergen as my royal advisor. Everything we did in Vergen will be in vain. There's still hope. We have the dagger. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. सारे नॉर्थ के सारे किंग हैं यहाँ पे. Signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanseville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. My kings, before you sign this document, please hear me out. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Henselt's bidding. You deny my right to speak. नहीं है यहाँ पे. Emir Var Emrys. अरे लेथो को पकड़ लिया इसने. What is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Foltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Sorceresses. They helped me with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages. Lodge of Sorceresses? We have compiled a list. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, Triss Merigold, Kira Metz, Francesca Findaber, Ida Emin, and finally, Sheila de Tanseville. To my deepest regret, 2 Nilfgaardian sorceresses, Asira Varanahid and Fringa de Vigo, were also members. The Emperor will deal with them. इसमें से एक को तो शायद मार दिया ना. Fringilla को. Our queen left to powder her nose. Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Your document will have to wait, honorable sorcerers. You have no right. Surrender now if you don't want another massacre, this time in Loch Muin. A court of law will reveal the traitors. शीला ऐसे तो नहीं पकड़ाएगी शीला. ये सास्किया.
भाई साहब Geralt! We're trapped! I can't get through! Sheila! You must get Sheila! You must get Sheila. कौन बोल रहा है? योरविथ? हाँ योरविथ ही बोल रहा है वो। योरविथ और किंग रेडविड ऑफ रेडेनिया यही हैं और मतलब उस यहाँ पे ट्रैप्ड है। हैंसेल्ट भी यही है, अपना वो अपर है सास्किया तो यहाँ है ही है, स्टैनिस भी यही है और टेमेरिया को इस समय जो कमांडर लीड कर रहा है वो भी यही है और छोटे मोटे जो और राज्य हैं वो भी यही हैं, सभी तो यही हैं। मतलब ये है भाई एपिलॉग, यहाँ से जाना है ना। फीड द ड्रैगन, रुक जाओ, केमिकल जितना पी सकूँ मैं। पीटर स्पिलर पी लेते हैं, एक बुल्फ पी सकते हैं। ड्रिंक इट। जरकेरियन 4 टैलेंट्स मिले अपने को, इसमें से अपन थोड़ी शॉर्ट्समैन स्लिप बढ़ा लेते ना। ये बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 ये क्या हो गया? यहाँ पे किसी को बढ़ाना है क्या? ये लो। Stand back while you can, Witcher. शीला होशियार बन रही तू हैं? You can't stop me, not you, not anyone else. अबे यहाँ, वाह, पीछे If I have to, I will kill you. मेरे को लगा यहीं से ड्रैगन को मारना है, इस चक्कर में मैं रुक गया था, अदरवाइज तो। Stand back while you can, Witcher. You can't stop me, not you, not anyone else. If I have to, I will kill you. How do you like my dragon? भाई ये तो पूरा You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule.
We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Voltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Oh. Letho is the king of liars and emperor of traitors. Arey. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Okay, तो अभी देखो अभी क्या हुआ बेसिकली। तो जो लेथो था ना, उसे उसका जो एक्चुअल फंडर था, स्पॉन्सर, मतलब जो पीछे से उसको जिसने असैसिनेशन का ऑर्डर दिया था, वो थे निल्फगार्ड का एम्परर, ठीक है। और जब उसे पता चला कि ये लॉज ऑफ सॉर्सरर्स भी मारना चाह रही हैं किंग्स को, तो इसी कारण से उसने इनकी बात भी मान ली। तो किंग डेमेवेंड जो था, एड्रिन का किंग, जो एकदम ऐसे ही था धरा पुका, तो उसको तो लॉज ऑफ सॉर्सरर्स ने मरवाया था। बट उसके बाद लॉज ऑफ सॉर्सरर्स का कोई काम नहीं था, मतलब वो तो बस खुश थी, चलो रेडोवेड वो डेमेवेंड मर गया है उधर का एड्रिन का, क्योंकि वो बहुत वीक था। उसके कारण नॉर्थ यूनाइट नहीं हो पाता और वो निल्फगार्ड के खिलाफ वॉर वगैरह ये सब नहीं जीत पाते। लेकिन उसके बाद फिर किंग फोल्टेस को मारा लेथो ने निल्फगार्ड के कहने पे। उसके बाद हैंसेल्ट को भी मारने आ रहे थे ना लेथो, तो लेथो का वो था ओरिजिनली, ठीक है, इतना तो ठीक है। तो अभी अपने को इसको पहले हराना, ड्रैगन को ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद लेथो से डील करेंगे। Something's not right. क्या हो गया भाई? समथिंग इज नॉट राइट बोल रही थी, मैं इसलिए अलग हट गया। अच्छा, आई थिंक कुछ होगा भाई। ट्रेस कहाँ है अभी? ट्रेस अभी आई थिंक कुछ पता नहीं भाई उसका, मे भी ठीक हो। लास्ट टाइम देखा था तो वो किंग स्टैनिश जो नहीं रेडाविड ऑफ रेडेनिया था, वो गया था उसके पास। अब पता नहीं ठीक है कि नहीं पता, ठीक है। हाँ भाई, चलो अभी चलते अपन। You can't stop me, not you, not anyone else. मैं पुरानी जगह पड़ा था। If I have to, I will kill you. How do you like my dragon? Kill him now! You're late. You've got no... Farewell! The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed! I'll be torn to bits! Geralt, remove it! You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Okay.
भाई ये मरने ही वाली थी, अपने ने इसका डायमंड हटा दिया तो बच गई। डिफीट द ड्रैगन। रुको, ड्रैगन को इससे मारना है अपने को, लीपा आयल हार्ट के ड्रैगन। है ना? हाँ, पहले इसको हेल्थ डाउन करना है, उसके बाद इसको, ठीक है? तो पहले तो इसे पूरा मारना ही पड़ेगा। उसने कुछ उसका भी बोला था ना, क्या कहते हैं अपने, येनिफर और बेंगर वर्क का भी बोल रही थी। If you survive, then go to Yennefer or Bengavarg. Insured. चलो इसको देखना पड़ेगा भाई, इसको मारना कैसे है। ड्रैगन्स ड्रीम, इसका नाम ड्रैगन्स ड्रीम ही क्यों है? Damn it! अरे मेरे पास डैगर थे ना, डैगर्स क्यों बचा के रख रहा हूँ मैं? ये स्टिंग वाले इनको यूज कर पा रहा हूँ मैं। चलो चलो, कहीं भाग गया क्या ड्रैगन? एक काम करूं, मेरे पास वो ट्रैप्स भी तो थे, ये ट्रैप्स Take that. और ये लो।
ये ट्रैप्स मैप्स कुछ काम के नहीं है। अरे मेरे को इतनी मेहनत से मैंने बिछाए और ये एक सेकंड और भी डैगर्स थे ना मेरे पास। दो ही है, ये 3 है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा इस बार अपन वो ट्रैप्स नहीं बिछाएंगे। चलो ऊपर चलते हैं। एक सेकंड, वो मैंने तो सारे बॉम्ब बनाए थे ग्रेप शॉट वाले और डांसिंग स्टार। Take that. आर्ड क्वीन, कौन सा रहा क्वीन में से? इग्नी। ये इजी है। रिफिल करने दो, पहले रिफिल हो जाए, फिर क्वीन लगाओ, फिर इग्नी लगाओ। मुझे वो फायर रेजिस्टिंग वाला कोई सा पोर्शन पी के आना था। अबे मेडिटेशन अलाउड है। ओके, फायर रेजिस्टिंग वाला कौन सा पोर्शन देता है? रेड हेज। विरिल कौन सा रहता है? शायद ऐसा अपने पास नहीं है फायर रेजिस्टिंग वाला पोर्शन। यहाँ होगा, रुको। मून रून, पालकास ब्लड।
Igni. Wonder how many more will turn up. छोड़ नहीं मानेगा ये थोड़ी सी हेल्थ बची बस ये हो गया ये रही इग्नी अबे बच गया पीछे 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 वो बहन चोद गया क्या? हाँ मर गया जहाँ तक मतलब मर नहीं गया अभी हेल्थ डाउन हो गई वैसे उसकी ये देखो अब QTE से बस क्विक टाइम इवेंट्स ओए मारना नहीं था यार अच्छा ये डैगर हाँ यूज तो किया था अपन ने डैगर अब करा यूज रहेगा तो उसका स्पेल अपन ने हटा दिया है अब बच जाएगा ये ड्रैगन जिंदा तो लग रही है I think we can skip the niceties. Yeah, unnecessary. Yet I sense your readiness to fight on. I don't know that I can trust you. Inborn caution. Inborn caution. We were fighting to the death just minutes ago. I understand. I believe I owe you part of my treasure. Family tradition and all. No need. Can you make it back to Vergen? I think so. I've always healed quickly in the past. I met another rigger once. Your witch freed you from the spell. You owe him. Philippa escaped. Okay. Can you tell me what'll happen to Yorvith now? Let's be honest. He's a terrorist. I'll not lie about him nor whitewash his deeds. He must earn respect on his own and perhaps
A few generations on, humans will forget. Did you intend just to use him? Geralt, Yorvith has killed more humans than you've eaten chickens. He's not one to be used. It's not that simple. He came to believe in me and knew from the start what we were fighting for. He made a choice. अरे यार ये बोल के तो इसने Talking about those baby doe eyes, that intense misty gaze, the pouting. We shared a cause, fought side by side. Yorvith did and would do anything for you. Question is, what are you prepared to do for him? There will always be a place for the Scoia'tael in the free Pontar Valley. As to Yorvith himself, I've heard many say crude things about us. Thing is, as long as I can remember, I found dwarves fascinating. Must be a dragon thing. And though preferable to a human, an elf would be a compromise. I met another dragon once. You're not the first dragon I've talked to. You met my father, Villain Trettenworth. अच्छा उन्हीं की बेटी है ये. Spoke 3 jackdaws. I thought he couldn't have children. He thought so as well. Polymorphing. Did you get that from him? Just a hint of it. I can only assume one human form. He could transform into anyone he liked. You also don't have his quickness and reflexes. And I don't think I saw a single golden scale on you. Nor do I have his mustache or paunch. Sorry to disappoint you. हाँ ये तभी मैं कहूँ ये गोल्डन ड्रैगन की बेटी है लेकिन फिर भी गोल्डन क्यों नहीं है? Where is Borg these days? Who can know that? He taught me what he thought I should know and flew off yonder. It's the dragon's way. And he gave me my name. It's a synthesis, if I heard right. Synthesis. I prefer being Saskia. ओके चलो एटलीस्ट ये पता चल गया कि उसी गोल्डन ड्रैगन की बेटी है. बस इसमें थोड़ी म्यूटेटेड है, मतलब ये थोड़ी रेड ब्लैक टाइप है. Philippa took advantage of the chaos and escaped. Think she could reveal your secret? It's nothing I can control. I don't intend to pursue her. We may or may not meet again, but I shall leave that to fate. She's not one to give up easily. I think she'll come after you again, try to take control, as soon as she's done licking her wounds. I shall be cautious next time, and I know much more about Eilhart than she would ever wish. How's that? I want to ask you what. How's that? More than she would wish. Interesting. I obeyed Philippa, but I was not blind. We were close, and Eilhart could not keep all her secrets concealed. I know her weakness, something that can destroy her in an instant. Valuable and dangerous knowledge. Precisely why I'll keep it to myself. Sheila and Philippa have lost. The Lodge has been defeated. That's good, though temporary. I fear we shall hear of them again. You know Emir's armies have crossed the Yaruga? I expected as much, as did Philippa. Nilfgaard की आर्मी आने वाली We defeated मतलब the Adenian यहाँ. lords and Henselt. With a bit of luck, we'll defeat the Emperor as well. Well, Saskia. Time I was on my way. You shall always be a welcome guest in Vergen. I underline guest. Don't worry. I'm only ever a visitor. I know. Sometimes I wish I could see the future, like my father. And sometimes it's better to be surprised. Farewell, Witcher. चलो ड्रैगन हार्ट गुरु 1 इंट इनफ करके अपने को वो मिल चुके हैं अचीवमेंट्स. एक्जी यूज किया इन पे, एक दूसरों की मार दिए. सारे सॉसरसेस को मार रहे हैं भाई. किंग रेडाविड और रेडेनिया तो बहुत आगे हो गया भाई.
Epilogue. You're with. चलो finally मिल गया. What happened to Saskia? She's alive. Wounded from our scrap, but alive. She impaled herself on a tree, and then I had to use that dagger. But she'll make it. Mountain air is good for a dragon's hide. You're the most noble human I know, Gwynblade. खुश हो गया भाई ये I'm भी. no human. I'm glad you reminded me. My hatred for the species abated for a moment. What about Letho? Strange thing. He sits in the Temerians' former camp. I believe he awaits you. How do you know? I saw him. He's got Triss. अच्छा ट्रिस है इसके पास. चलो ट्रिस जिंदा है at least. ट्रिस भी जिंदा है, फिलिपा भी जिंदा है और The city was staged to a bloody सीला भी जिंदा ही है. The players? There were many. At first it was a hunt for the traitors, but it soon turned into a hunt for all mages. And there were a few skirmishes between Kedweni, Redanian and Temerian troops. Rape, pillage and murder. Not necessarily in that order. The pastimes of the Order's pious knights. And the regular troops soon followed suit. The kings, with their choice units, left the city just after the dragon attacked. And the Nilfgaardians? Remained neutral. That is to say, they shot anyone who dared approach their camp. भाई सबको मार दिया इनने. ये देखो ये सारे सॉर्सरेसेस मरी पड़ी बेचारी. अंदर चोद निकले ये भी. यहाँ जाना है अपने. रेप कर रहे हैं क्या? When we're done with you, you'll be a lump of whimpering meat. रुक जाओ इन्हें मारना ही. Elf! Killed a non-human. बेटे For the king! For Cadwyn! चलो भाई बच गई लड़की. Beasts! Bloody sons of bitches! Will you be all right? Yes, thank you. Leave me. What happened here? When the summit ended, we hid in one of the houses. But they found us. They cut off both my sister's hands so she wouldn't cast spells. But I managed to escape. They caught me here. Let's go, Gwynblade. This is madness. Lochween has changed. That's what it looks like now. बेचारे सबको मार दिया भाई. I think I heard something. Imperial troops. Imperial troops. Long live the Emperor! Defeat your opponent, go find Letho. Die, Nordling! Die, dog!
आजा आजा। मैं भूल ही गया, ऊपर में हेल्थ बाहर देखने ही भूल गया। क्वीन साइन का यूज ही नहीं किया, बताओ। चूतिया, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, ये वाला कट सीन अभी फिर से चलेगा, है ना? For the king! For Cadwin! Nice. Beast! Lochmween has changed. That's what it looks like now. चलो 100 पोशंस पी लेते, एक पीटर्स फिलर पी लेते, एक रुक पी लेते। एक टैलेंट मिला अपने को। यू कैन सेव नाउ। ओके, गेम सेव्ड। चलो इसमें कोई सब अपनी शॉर्ट में वो लगा लेते, एनहांसमेंट, व्हेटस्टोन, नेक्रोफेजेस। व्हेटस्टोन लगा लेते अभी। I think I heard something. Imperial troops. चलो आओ। Nilfgaardian Long troops. live the Emperor! Die, dog! Taste our steel! Die, Northling! Die, Northling! Taste our steel!
Die, Nordling. Chalo. Finish your story. I managed to sneak into the Nilfgaardian camp. It was relatively quiet there. Then I saw them leading Triss out. They let him go? No one dared stop him. I followed him. I think he noticed me, but didn't seem to care. Once the fighting died down, he went to the former Temeria. Yes. ये वाले बॉम्ब रखना पड़ेगा अपने को, ग्रेव शॉट, ये डांसिंग स्टार भी. Every night I'm dancing. लेथो. चलो ट्रिस जिंदा है. इसने बचा लिया मतलब ट्रिस को एक हिसाब से. Stop, Yorvith. I'm going alone. Why? This is between the two of us. Take care of Triss until I return. Your choice. Mine, indeed. There's one more thing you need to know. Nilfgaard's armies have crossed the Yaruga. War is inevitable. Vafail, Gwynblade. Don't get killed. Farewell, Yorvith. If I don't return within the hour, find Saskia and leave without me. Are you all right? Yes. He saved me from the Nilfgaardians and defended me from the troops. अरे भाई It's तो मैं time to सोच end रहा था. this. Yorvith's waiting. I'll catch up with you soon. Geralt, he knows a lot. I know, Triss. That's why we need to talk. Don't get killed, Witcher. I won't. लेथो. भाई अच्छे सॉन्ग है वो, डांसिंग विद योर वॉइस. हाँ. Took you a while. बहुत सही है. Is that bauble from Sheila's megascope? Every night I'm dancing with your ghost. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. अच्छा. I love that moment. इसी ने डायमंड चेंज किया था ना. Vodka. Vodka. Leave me have it. Not me. Vodka. Vodka पीना है क्या? Not me. Vodka में कुछ मिला ना दिया है ना, इतना तो नहीं हिला था. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. चलो. Recovered your memory yet? Not entirely. थोड़ी memory तो आ Remember गई. how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. Yennefer Venga. The winter solstice 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. Wraith cannot be He killed. was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land.
This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. इसने अच्छा वाइल्ड हंट्स के साथ डील करी थी. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the hanged man's tree and the wild hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. I chased you for many reasons. I chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Yennefer, tell me what happened to her. Tell me about Yennefer. What happened after I departed? She was feverish for several days. Delirious. In agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, Nilfgaard में है मतलब Yennefer. Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Ox, Serret, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful, no violence. That's how I met Vatia de Rideau. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the northern kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the lodge from her. Those Imperial spooks have their ways. All I heard is that Vatir had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north. That's where my knowledge ends. Nilfgaard में ये मतलब. She was when I left. Okay. The Riders of the Valhalla, you know who they are. How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. अच्छा हाँ, वाइपर स्कूल तो वाइल्ड हंट के उसमें माहिर रहता है ना. Identities of the riders. From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No Market Square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world? They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours.
The conjunction of spheres. Know the theory? Do you know how monsters appeared in our world? There's not a Witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. They come in person on special missions. As they did for you and Yennefer. So, elves from another world and their trained wraiths. What did they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. ओके तो अभी देखो कैसा, देखो कंजक्शन ऑफ ये विचर को जो है ना वो एल्व्स ही ले गए थे, लेकिन ये एल्व्स ना दूसरे यूनिवर्स के थे, ठीक है। तो विचर के यूनिवर्स में कंजक्शन ऑफ स्पेयर हुआ था, जिससे ही ह्यूमंस वगैरह इस मतलब इस यूनिवर्स में आए थे विचर के इसमें कि पहले यहाँ पे सिर्फ एल्फ रहते थे। तो यहाँ से फिर जब कंजक्शन ऑफ स्पेयर हुआ था तो एल्व्स इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल हो गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना राजमाज क्रिएट कर लिया था। उस वर्ल्ड में सिर्फ यूनिकॉर्न रहते थे और एल्व्स थे, वहाँ की ह्यूमंस को मार डाला था एल्व्स ने। तो यूनिकॉर्न को लेकिन वो मार नहीं पाए, लेकिन फिर बाद में उन्हें सर्वेंट्स की ज़रूरत थी उधर के एल्व्स को, क्योंकि उन्होंने तो सब ह्यूमंस को मार डाला था। अब बचे थे यूनिकॉर्न उनकी बात मान नहीं सकते क्योंकि वो तो यूनिकॉर्न थे। तो वो यहाँ से सर्वेंट्स लेके जाते थे इस वर्ल्ड से, विचर के वर्ल्ड से। तो वो पोर्टल ओपन करते थे लेकिन बहुत कम उसमें ओपन होते थे, लाइक एक टाइम पे कुछ ही लोग आ जा सकते थे। तो इन रियल पर्सन अपना वो बहुत कम भिजा सकते हैं, लेकिन अपनी रेत को काइंड ऑफ एक स्पिरिट टाइप को भिजा सकते हैं। इसी वजह से वो रेत के फॉर्म में आते हैं इस वर्ल्ड में, और बहुत ही स्पेशल ओकेज़न पे वो अपने खुद के सेल्फ में आते हैं, मतलब फुल बॉडी लेके। तो वो थे आखिर ह्यूमन, मतलब एल्व्स ही, जो वाइल्ड हंट है वो एल्व्स ही हैं। वो पुराने एल्व्स हैं, मतलब दो टाइप के एल्व्स होते हैं, एक एनशेड और एक और कोई सा होता है, रुको मैं देख ले रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एल्व्स, अरे भूल ही गया था। एल्व्स इन विचर वर्ल्ड, हाँ। तो एक होते हैं, एक एनशेड होते हैं, देख लेते हैं ना अपन फुल। एक NLA होते हैं और भी होते हैं एन उदूद वगैरह, तो 4 प्रकार, लेकिन NLA थे शायद ये। हाँ, NLA पुराने वाले थे जो मतलब उधर दूसरे वर्ल्ड में गए हैं ना। हाँ ये NLA थे, जो दूसरे वर्ल्ड में गए वो NLA थे। एन से मतलब इस वर्ल्ड के हैं वो, जो अभी रह रहे हैं। Why did you become an imperial star? How did a witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. The rulers of the North come up to about where his Pauline's end. Why? Simple. He promised to rebuild the School of the Viper, the Witcher's order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago, and Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities. Besides Seret and Ox, I know of 2 other Witchers of the School of the Viper who should be alive and on the path. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Now they can come out of hiding. They can come home. अच्छा चलो, तो इसका पॉइंट रीजनेबल है। ये स्कूल ऑफ वाइपर को रिबिल्ड करवाना चाहता था ताकि विचर्स वहाँ पे रह पाएँ। इस वजह से उसने मतलब ये किंग्स को मार रहा था। नीलबार का साथ दे। Why did you wait for me? Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is,
Only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way, but if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. Okay, what was it all about? What was the Care aim? to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the North. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. ओके तो मतलब ये प्लान भी सही था निल्फगार्ड वालों का। ये था कि लेथो को भिजा के सारे किंग्स को मरवाओ, सॉसरस के ऊपर ब्लेम डालो, सिविल वॉर करवाओ, जितने लोग मरवा सके एक दूसरे में मरवाएं, फिर निल्फगार्ड आके अटैक करें, तो फिर बस वो ही हो जाएगा। I'm still curious about this decision. I need to know the whole picture. Care to tell me what... How did you find Sila? How did you manage to contact Sheila? It wasn't a problem once I learned of the Lodge's existence. Initially, she watched my every move. But sooner or later, everyone starts treating me like a big oaf. I mean, I can't change how I look. I stayed close to Sheila, killed a few beasts for her, and whined about how unhappy I was, how unfair the world was. So much, in fact, that I actually got her gander up a few times. I made sure a few potentially trustworthy witnesses saw us together, could link us. Security in case I was captured. I also prepared to assassinate the King of Kavir. Esterad Tyson was to be the first victim of the mysterious assassin. वहीं पे इसे सीले मिल गई उसे. Dirty deed. Sheila asked me to slay Demavend. The gods had smiled upon me. I couldn't believe my luck. Here I've been trying to figure out how to frame Sheila. And now all I needed was to carry out her orders and follow through. Okay. तो मतलब देखो ये बेसिकली कोवीर का किंग जो है उसे मारने गया था, लेकिन कोवीर के किंग की एडवाइज़र है शीला, तो शीला मिल गया उसे। तो शीला ने इसे पहले ही बोल दिया कि चलो एडन के किंग डैमेवेट को मार दो, तो ये तो खुश था, मतलब कि दुगने पैसे मिल रहे हैं, तो पहले उसी को मार दो किंग डैमेवेट को। ठीक है, ये भी बढ़िया था। Where did you get your information about the lodge? From the Emperor and Vatir de Rideau, the Emperor's chief spy. And I believe they got it out of Yennefer. She recovered her memory? Nah. I'd never claimed she informed on her friends consciously. I expect they found a way to tap into her memory in spite of her amnesia, and without her knowing it. There was a sorcerer present when I was questioned. A young, proud intelligence officer. Whatever the case, they gave me a list of the sorceresses in the lodge. Only Emir, Vatir, and I were present. Only we knew of the mission. Okay. How did you kill Demavend? How do you manage to slay Demavend? Sheila's magic. I mean, she could give us the king's every move. His habits, the positions of the palace guards, anything. All we had to do was navigate the labyrinth and land the final blow. Besides, she had plenty of gold for the preparations. Greased palms abundantly. It had all the makings of a cakewalk, but it's never that easy. We barely avoided our pursuers, and we wouldn't have if not for Yorveth Scoia'tael, another of Sheila's ideas. With Yorveth's elves, not only did we cut down Demavend,
but traveling with them put us out of the Lodge's reach. We could calmly plan Foltest's and Henselt's assassinations. How did you know Foltest would get to the soul? How did you know Foltest would come to the monastery's solar? Yorveth and I planned Foltest's murder. The King of Temeria would have to deal with the Lavalette sooner or later, and he made no secret of it. I was sure he'd want to recover his bastard children in the process. And where do they take the children when a castle's under siege? I had to become a monk, but I couldn't just arrive at the monastery and claim I'd seen the light. Not very believable. So one of Arian's patrols out in the forests happened on a Scoia'tael unit torturing a helpless monk. Arian's brave men drove off the elves and I found shelter in the monastery. No one noticed you had no wounds? I paid the monk who treated me a lot of orange to stay silent. Actually, it was only a loan, because I killed him later. Only the dead can keep a secret. Then all I had to do was wait for the situation to develop. When I saw you enter the chamber with Foltest, I thought I might fail. Luckily, you failed. To recognize an old friend. Okay, भाई सब कुछ इसने बता दिया कैसा क्या हुआ था. You wanted to take over. When did you decide to get rid of Yorveth? As soon as I realized I couldn't manipulate him. A true fox, that one. He was so observant, so dangerous. I got the sense he might see through me at any moment. You made a mistake. You were untouchable as long as the Scoia'tael were protecting you. Maybe, but with Yorveth, my hands were tied. If I'd finished off Kieran... But you didn't. And that allowed me to drive a wedge between you and Yorveth. I forced you to flee. And I let you live. You know I could have killed you. You're forgetting. No, I remember. So Sheila was looking for you when she came to Flotsam. Mm-hmm. She thought she was still in control and wanted to get rid of me. I'd bet my eyes that she thought I'd lost my mind, or that Yorveth was manipulating me. And the North descended deeper into chaos. Exactly. There was just one problem. You. I could have killed you in the Elven ruins. Thing is, you weren't really my enemy. Okay. You failed to slay Henselt. You screwed up with Henselt. Sabrina's curse tore that down. First off, we got holed up in that hideout in the ravines. Then Sheila showed up and started watching Henselt like he was her own ass. By that time, his death was no longer necessary. Fate had smiled upon us again. I learned of the summit and the efforts to reconstitute the council and conclave. The ideal setting for the mission's grand finale. Yennefer and the Violent. Care to tell? No, I'm done talking. Let's finish this. Want to fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. The Imperial army is probably crossing the Yaruga as we speak. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight, and this time I'll kill you. Go somewhere far away. Give it your best shot. अभी हम इसको छोड़ सकते हैं, हम इससे लड़ सकते हैं. वैसे अपना एनिमी है नहीं, विचर भाई होते. इसने वही किया जो करता, मतलब
विचर वैसे भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते, जो उन्हें पैसे देगा उनके लिए काम करेंगे। बस ये है कि विचर ह्यूमंस को नहीं मारते, इसने ह्यूमंस मारे। क्या करना भाई इसके साथ, मतलब अब इसका नाम तो क्लियर हो गया है विचर का, इसने एनीफर का भी मदद करी, छोड़ देते चलो इसको। I've learned all I wanted to know. I can feel the memories coming back. Your death won't change a thing. Go where you will. Just like that? No threats? No words of wisdom? Are you going or not? Farewell, Geralt. हम इसके साथ फाइट भी कर सकते थे, बट वो सेंस नहीं बनाता कुछ। कुछ याद आ रहा है इसे। भाई छोड़ दो, अरे छोड़ दिया भाई, ऐसे थोड़ी मारते हैं अपन उसे, इतना अच्छा कैरेक्टर है, उससे शुरू से कुछ खास मतलब हेट नहीं था। उसने ट्रिस को भी बचाया, उसने एनीफर को भी बचाया, और उसने अपना नाम भी क्लियर हो गया ना। The Witcher had traveled far and wide in search of the king's और letters. नॉर्थ वैसे भी Along the बिखरने way, वाला he had है। met both the righteous and scoundrels, Bernard Laredo amongst the latter. Laredo sold Flotsam to Kedwin and scattered the local non-humans to the four winds. Flotsam became a military base. Its civilian population was resettled. Flotsam तबाह In मतलब। Eddard, the Witcher witnessed Saskia the Dragon Slayer achieve a great victory. The Pontar Valley, previously Upper Eddard, became a promised land for outcasts who dared dream of freedom. Even sly old Zoltan Chive came to believe in this land of bliss. Yet dark times approached for the architects of the New Order. Dark clouds had been gathering over Temeria since Foltest's death. Stripped of its king, the land was like a rich cloth which nobles began to shred. अच्छा। These minor scavengers, however, scurried off in fear when true predators reached out for their prize. The summit at Loch Muin sealed the fate of Foltest's realm, when Radovid of Redania and Henselt of Kedwin divided it between them. अच्छा, टेमेरिया को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक रेडेनिया ने ले लिया और एक कैडविन ने। A tempest descended on the north, at least partly the work of manipulative mages. It seemed the turmoil in Temeria, Eddern, and Kedwin would benefit them most. अरे रे, मेजेस को मार रहे Common हैं भाई। folk turned against sorceresses and all magic freaks, witchers included. ये तो है भाई। Castles that had hitherto welcomed mavens of the magic arts now shut their gates to any who sought shelter there. A witch hunt ensued. Witch hunt. इस witch hunt में कोई बच थोड़ी पाया होगा। It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. तगड़ी सॉसरस तो बच गई होंगी, लेकिन Yet जो as छोटी troubled as मोटी the होंगी days वो तो seemed, सब मरी we होंगी। that in some way shaped the world's fate finally received some respite. Dandelion. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in a lapse of the muses. अरे ये Who तो could have भाई known this tempest which had ravaged the north was but a भाई harbinger एकदम of चिल darker है days, भाई, and the preamble to भाई an को मतलब entirely नहीं new tale of Geralt of Rivia. भाई, बस गेराल्ट की स्टोरी लिखता है। Do the credits to see the game's ending. ओके तो गाइस यहाँ पे अपना ख़त्म होता है विचर 2 Assassins of King। ठीक है।
गेम में काफ़ी अच्छे रिवील थे। नॉर्थ जो है अभी देखो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। निल्फगार्ड ने हमला किया ना तो आराम से जीत जाएगी, अगर किया तो हम देखते हैं उन अगले गेम में करे जो भी हो। अब गेराल्ट ऑफ रिविया का देखते हैं वो क्या करता है आगे चल के। एनिफर कोई ढूंढेगा और सिरी को ढूंढेगा, सिरी का भी कुछ पता नहीं। बाकी डेडलाइन एज ऑलवेज डिवॉर्चरी करते हुए पकड़ाया गया। डिवॉर्चरी नया शब्द सीख लिया मैंने, विच मीन्स कि एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाना डिवॉर्चरी कहलाता है। भाई अभी क्या करेंगे? अभी यहाँ पर रुकते एक एंड क्रेडिट सीन है, उसमें नीचे लिखा था अभी जब हो रहा था ना कि वेट फॉर द गेम्स क्रेडिट टू रोल ऑन टू सी द एंडिंग। अभी यहाँ पर देख थोड़े से क्रेडिट देख लेते हैं। विचर्स की पूरी विचर की लगभग मेमोरी आ चुकी है ऑलमोस्ट। उसने सब पता कर लिया है, ठीक है। सेकंड गेम के एंड तक ये था भाई वाइल्ड हंट का लीडर एन शेन कौन थे? एनएलए हैं। तो अगले गेम में कंजक्शन ऑफ स्क्वायर वगैरह के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। कंजक्शन ऑफ और तेरी मेरी का रोल वाइल्ड हंटर ने क्यों उठा के ले गए थे वो सब बताएंगे। Geralt of Rivia, Live Writer English. हो गया क्या खत्म? नहीं अभी नहीं हुआ। देखते भाई ये कितना बचा ये गेम वर्ल्ड। भाई अभी कौन से गेम का सोचा है आपने और कब? अभी आज कितनी 13 है ना। कल विचर 3 का नेक्स्ट जेन एडिशन आने वाला है, मतलब नेक्स्ट जेन वाली ग्राफिक्स के साथ आने वाला है विचर 3 का ही। तो एक तो उसको स्टार्ट कर देंगे कल ही अगर हो पाया तो। विचर 3 के बस मुझे सेटिंग वेटिंग थोड़े मोड्स वगैरह एक दो डालने पड़ेंगे, मतलब देखते हैं, मतलब पूरा सेट करके ही करूँगा मैं वो करके। नहीं तो फिर एक अरखम असाइलम का सोच, अरखम असाइलम मतलब अरखम सीरीज पूरी, अरखम असाइलम वो है एक, वो जल्दी निपट जाएंगे अरखम, क्योंकि वो मैं कई बार खेल चुका तो फटफट निपटा देता हूँ मैं उसको 100% कर चुका। कल देखो या तो विचर स्टार्ट कर देंगे या अरखम कर देंगे, देखते हैं। कल तो शायद अब डाउनलोड करने में ही लग जाएगा। अरखम बहुत तगड़ा है भाई। अरखम के बाद अपना फिर एसेसिन क्रीड के भी सोच रहा हूँ मैं, बट वो अभी नहीं। एसेसिन क्रीड मतलब दिसंबर के बाद, जब विंटर सेल आएगी ना स्टीम की, तब उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बनानी मेरे को, गाइड वगैरह के ऊपर। हाँ वो कर दो बैटमैन वाली, हाँ बैटमैन वाली वही करना है भाई।
तगड़ी गेम है वो। देख लो, उन्होंने अपने वाइफ, अपने फैमिली, हस्बैंड वडबैंड सबको थैंक कहा है डेवलपर्स ने। दिस गेम इज लाइक वाज योर अचीवमेंट आल्सो। देख लो। हाँ भाई यार, अरखम ही ठीक भाई, अरखम ही कर देंगे, जल्दी नहीं पड़ जाएगा वो। अगर बैटरी अच्छे से खेलने बैठा तो मैं एक दिन में हटा देता हूँ उसे, मतलब 100। बस उसकी मैंने स्टोरी करेंगे क्योंकि उसमें फालतू की बकचोदी बहुत है। अरखम असाइलम में रिलर्स की ट्रॉफी हुई है सब की, मतलब नहीं। वैसे स्टोरी करेंगे, फालतू घूमना, क्योंकि एक बार मैं कर चुका हूँ उसे 100%। रिकॉर्डिंग असिस्टेंट। और भाई बताओ एग्ज़ाम कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया एकदम। 2 एग्ज़ाम हो गए हैं, यूसी और BVMS के, 2 और बच्चे हैं, साइबर सिक्योरिटी और IWT के। देखो भाई क्या हो, कल है साइबर सिक्योरिटी का, फिर 17 को IWT का, उसके बाद अपन फिर वाइवा हो गए 1-2 दिन और फ्री, 2-4 दिन जितने भी होते हैं वाइवा। फिर उसके बाद अपना बस फोकस रहेगा इसी पे, मतलब इस पे, और एक चीज़ और है पढ़ाई से रिलेटेड। पूछेंगे आप भैया आपके एग्ज़ाम बताइए आप तो। असिस्टेंट क्रीड तगड़ी है, मतलब वो मैं सोच रहा हूँ उसको अच्छे से स्टार्ट करने का। और मेटल गियर सॉलिड का भी सोच रहा हूँ मैं, मेटल गियर सॉलिड के पूरा सॉलिड। बट वो मैं सोच कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि MGS3 का रीमेक आने वाला है। MGS3 का रीमेक, MGS3। अबे हैशटैग क्यों लग रहा है? कुछ दबा दिया क्या मैं? रीमेक। हाँ ऐसा सिक्योरिटी तो मैंने भी दी थी एग्ज़ाम 5th सेम में। अच्छा, सिक्योरिटी इजी है, कंटिन्यूस, पता नहीं कब आएगा, तो देखना पड़ेगा कहाँ से करना है। MGS अगर स्टार्ट करूँ, क्योंकि टाइमलाइन वाइज देखो, सबसे पहले MGS3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 1, 2 और 4, फिर ऐसे चलता है वो। लेकिन रिलीज ऑर्डर तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है, और 3 का रीमेक बन रहा है। अब देखेंगे, क्योंकि वो बहुत टफ गेम है मेटल गियर सॉलिड। और हेलो का भी सोच रहा हूँ। हाँ भाई, स्क्रीट पहले से ही शुरू करना। हाँ, अपन एकदम फर्स्ट पार्ट से करेंगे। फुल लिस्ट बना के रखी मैंने, कैसे क्या खेलना है, फुल DLC में LC, कौन सा एडिशन बाय करना है। अब तो वाला स्टीम पे आ गया ना, पहले वो दिक्कत थी, उस चक्कर में मैं नहीं खेल रहा था कि भाई सारे गेम एक ही लॉन्चर से लेना है। तो वो वाला एपिक गेम पे था। एपिक गेम अपन फ्री गेम के लिए रखते हैं। सीनियर टेक्सचर आर्टिस्ट OGTech इटजी। अब सारी गेम स्टीम पे असिस्टेंट क्रीड के ऑलमोस्ट, मतलब वो छोटे मोटे जो 2D वाले गेम रहते हैं ना मोबाइल वाले, वो नहीं है, वो वैसे भी नहीं खेलते, बेकार है वो। मतलब बेकार तो नहीं है, वैसे स्टोरी में कुछ आगे नहीं बढ़ाते वो ही। स्टीम के अब सारे हो गए। अब अगला जो है मिराज है, आई थिंक असिस्टेंट क्रीड मिराज, तो वो आएगा जब भी, तब उसको भी खेलेंगे। मतलब तब तक तो अपन पूरा कंप्लीट मार देंगे। टोटल कितनी गेम है उसकी? 1, 2, 3, 4, रॉग, यूनिटी, सिंडिकेट, ओरिजिन, ओडेसी और वालहल्ला। 10 गेम है ना? नहीं 12 गेम है, हाँ 12 mainline गेम है।
उसके बाद एक लिबर्टी फ्रीडम क्राई, ये सब भी है। हो जा भाई, ओए motion capture, CG intro movie, CD project red, original story, Sebastian Stefan. Concept art, Bart Lumage, Kaveri, John Marek. गजब नाम है यार ये। पॉलिश में लिखा होगा ना, ये पॉलिश गेम ही है ना। प्रोजेक्ट रेड, कौन सी कंपनी है, कहाँ की है? कौन सी कंट्री की है? वेबसाइट, लॉस में चल रही क्या? क्या पता है, जो भी हो। पॉलिश वीडियो गेम कंपनी है, देखो वही। ये वाला एक अपन ने किया था, ये वाला, बट ये पूरे भाई अब की बार डिस्कॉर्ड पे मार्क डाल देना स्ट्रीम करने से पहले। अच्छा, लिंक डाल देना। हाँ ठीक ठीक ठीक। नहीं मैं कर डाल तो देता था। आज सच, आज भूल गया हूँगा तो डाल देता था। जोना पैक जिपकॉस का। अरे भैया कब तक चलेंगे क्रेडिट्स? मैसेज भी डालना। ठीक 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 है तो ठीक है। मोनिका पिकुला, मोनिका सजालजर, एक्चेस, उसके बहुत तगड़े नाम आ रही है। कितना टाइम हो गया इसको खेलते हुए? अपन ने कब स्टार्ट किया था? अब भी किया था ना, जल्दी, मतलब प्लेग टेल खत्म होने के बाद ही किया था। यूट्यूब जल्दी कर दिया रे खत्म। 1 महीने, अच्छा 1 महीने पहले तो किया था, जल्दी भी नहीं किया। यहाँ अपन ने बना के रखी, देखो ये सब, ये विचर सीरीज है, प्लेग टेल सीरीज है, मेट्रो सीरीज है। मेट्रो भी तो खेलना है। जीटीए तो मैं खेल ही नहीं पाता, लेफ्ट 4 डेड का था। ओके
वॉइस रिकॉर्डिंग इंजीनियर हो जा भाई, खत्म हो जाओ। डॉग कॉकेल ने गेराल्ट की वॉइस दी है। विचर 3 में किसने दी होगी? DOUG DOCK वाली, ये वो लौंडा है ना, ये इसी ने दी है भाई तीनों उसमें, तीनों गेम में आई थिंक। हाँ, क्योंकि विचर 3 का तो मुझे पता ही नहीं दी है, 2 का पता चला। अरे वाह, ये वीडियो गेम्स विचर में भी दी है, विचर 2 में भी दी होगी और विचर 3 में भी दी है। एड्रिन आर्नॉल्ड, आर्मरी रिचर्ड, एमरी रिचर्ड, एमोरी रिचर्ड, मोरी रिचर्ड भी हो पा रहा है, वो साइलेंट हो। केविन लोपेज, अरे एक गेम है हॉरर वाला, एलियन सीरीज का है, एलियन आइसोलेशन। इसको मैंने खेला था, आधा तो कर लिया था, जहाँ तक कितना कर लिया, मतलब 2 घंटे का कर लिया था, जितना भी हो। हाँ, विचर ब्लड रीजन का अपन देख लिया भाई, बढ़िया बढ़िया है, प्रॉमिसिंग लग रही है। मतलब अगर अच्छे से दिखाए ना, वो कंजक्शन ऑफ स्फेयर है, पुराने एंशियन की कहानी, एनली एंशियन सबकी, मस्त हो जाएगा। वो एक्ट्रेस भी अच्छी है, वो वाली व्हील ऑफ टाइम वाली है ना। पिक्चर ब्लड ऑरिजिन्स, पिक्चर की एक स्पिन ऑफ और आ रही है, सीरी और उसके ऊपर, मतलब सीरी जब बुक्स में उनके साथ चली जाती ना, सीरी एंड कौन थी वो, सीरी की स्पिन ऑफ आ रही है। मतलब सीरी पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, उन पे भी उतना ही होगा फोकस, ड्यूज पे होगा ना। ये वाली कोई सी स्पिन ऑफ आ रही है सीरी और रेड्स के ऊपर। हाँ, रेड्स बेसिकली ग्रुप्स, सीरी इनके साथ एक बार मतलब बुक्स में एडवेंचर पे जाती है। सीजन 3 और सीजन 4 के बीच में टेक प्लेस करेगी, ये सीजन 3 के बाद ही आएगी। अभी तो ब्लड ओरिजिन, हाँ भाई, जेस्कियर उसमें आएगा, आ गया था। जेस्कियर उसमें क्या कर रहा है? मतलब ब्लड ओरिजिन तो बहुत पुरानी कहानी ना, आज मैं देख नहीं पाया शायद जेस्कियर का। अच्छा, मैं भी कहानी सुनाने आया हो, वो सब हो। तो अभी तो ये आएगा, अभी आ रहा है ना 24 दिसंबर को ब्लड ओरिजिन, फिर अगले साल आ जाएगा वो पिक्चर का सीजन 3, फिर आएगा ये स्पिन ऑफ सीरी की, सीरी एंड द रेड्स, और फिर आएगा पिक्चर का सीजन 4। अब वो स्टोरी सुना रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जेस्कियर पैदा भी नहीं हुआ था ना, स्टोरी सुनाने आया। मतलब ऐसी जेस्कियर है, पोएट है ना वो। बिचर ब्लड ओरिजिन, यही ट्रेलर कौन सा, यही वाला है ना, टेलीपोर्ट। ओके,
अच्छा टेलीपोर्ट होके आ गया, अच्छा टाइम में पीछे जा, अच्छा हो सकता है। इतना गौर से नहीं देखा मैं, ट्रेलर देखना अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि स्पॉइलर मिल जाते हैं उसमें। ऐसे ऊपर ऊपर देख मारता हूँ बस। दिख, a 4 part स्पेशल इवेंट। अच्छा अच्छा, अलग अलग स्टोरी रहेंगी इसमें। तो वो देखते हैं अपन जैसा भी रहे। चार डिफरेंट स्टोरी रहेंगी ना। हाँ हाँ ये अच्छा, ये वाला स्टोरी टेलर, I need to sing a song back to life। अच्छा ये हाँ देखते हैं भाई, अब होगा जो भी। पिक्चर की नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ देखी कि नहीं? उसमें अच्छी खासी बताई है विचर्स की हिस्ट्री। ये वाला ये ऐसी लगती है जैसे ट्रेस है, लेकिन ट्रेस नहीं थी, एक कोई दूसरी सॉर्सरस थी। अभी भी नहीं हुआ भाई ये खत्म। भाई चलो ला ला है? पूरा देखो ही। हाँ हाँ लास्ट सही बोल रहा है, पूरा देख लेंगे। ट्रांसलेटर एंड प्रूफ रीडर्स टेस्टर्स, गेम टेस्टर बन जाओ भाई तुम तो, दिन भर गेम खेलो। हंगेरियन लोकलाइजेशन, गेम वॉर्ड, एल्डर रिंग भी तो खेलना है। एल्डर रिंग तो भूल ही गया मैं। अरे यार बहुत गेम है अभी। एक तो क्या है कि स्ट्रीम के चक्कर में मैं थोड़ा कम खेल पाता हूँ, ऐसे नहीं तो मैं दिन भर खेलता रहता था। और वो अच्छी बात है कि थोड़ा गेम कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं खेलना, नहीं तो पता चले कि खाने को ना मिले फ्यूचर। भाई आपने बंद किया उसके बाद में आता है। अच्छा बंद करना है इसको, क्या एस्केप दबाना है? अरे अरे ऐसे बढ़ भी जाता है यार, क्या चूतिया इंसान हूं। वाह अपन इतनी देर से फालतू ही। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी एंडिंग थी। थोड़ा ही सा बचा था ये भी, अगर हम 5 मिनट और लगते। ओके चलो ओके। मुझे लग नहीं रहा कि जिंदा बच पाएगा रैबिट।
जिस हिसाब से इसे बता रहे ना। अच्छा नहीं देख लिया था, जैस्किर देख लिया था मैंने कहा ट्रेलर में। रे 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 इंसान नहीं छोड़ता। अरे मस्त ब्रिज यार ये वाला। ये कौन है? निल्फ गार्डियन आर्मी लग रही है। कर दिया क्या अटैक नॉर्थ पे? भाई ये जिंदा तो लग रहा है। जला हमारा कर दिया भाई अटैक नॉर्थ पे। अब ये महाकम पहाड़ तो छूट जाते हैं, महाकम माउंटेन्स तो ठीक है गाइस। चलो वर्थ इट रहा। द वर्ल्ड एज वी नो इट नियर्स एट द पास्ट रिमेन्स द की टू द फ्यूचर। द पास्ट रिमेन की टू द फ्यूचर। किसका? विचर का पास्ट की पास्ट में ट्रैवल करना ही फ्यूचर, क्या पता भाई। चलो भाई यहाँ होता अपना गेम खत्म। ठीक है मैं वैसे ये देख रहा था, मैं लास्ट टाइम सेव कहाँ किया था? यहाँ पे आधे घंटे पहले सेव किया था ना। The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Edirn, the Witcher witnessed dark clouds had been gathered. It was a time. अरे मैं एस्केप भी दबाता था फिर भी चल जाता वो। चलो ठीक है तो एक बार मैं मेमोरीज देख लेते। मेमोरीज देख लेते सारी अपन पिक्चर्स की, जो भी उसे याद आया है। Death in Rivia. Rivia, population 1,234. In that, 253 non-humans. September the 25th, 1268, a riot erupts. A massacre ensues. The streets run with the blood of elves and dwarves. One person finds the courage to face the raging crowd. Butcher of Blaviken. During the rioting, 76 non-humans perished, including the Witcher, Geralt of Rivia, stabbed in the chest with a pitchfork by a man of whom we know only that his name was Rob, and he owed 3 crowns of the local Witcher के साथ क्या क्या हुआ कि वो तो देख ही लेते हैं। dies trying to heal the Witcher,
The bodies of Geralt and the sorceress are taken away by a mysterious young girl with ashen hair. Suri. Their place of interment remains unknown. I remember. Rivia. Yennefer. Death in Rivia के बाद Isle of Avalanche. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avalach, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. And they made off with Yennefer. I had to get her back. Return to reality. Return to the Witcher's path. फिर ये उनके वर्ल्ड में चली गई थी, फिर वो येनिफर को ले गए। LA की वर्ल्ड में Pursuing the Wild Hunt. September 13th, 1269, the Ravine of the Hydra. Following the Peace of Sintra, 53 officers of the Vryhed Brigade were brought here and executed, their throats cut. The elves' bodies were dropped into the chasm. I don't know what the riders of the hunt were looking for. November 23rd, 1269. Sintra, the village of Coldwater, and another victim of the hunt. An 11-year-old boy. His parents didn't even ask if he had a chance. I'm tired. February 24th, 1270. A high pass in the Armouche Mountains. An imperial manticore, one of the world's oldest and deadliest monsters. I used to feel excitement at moments like this. Now the beast is only an obstacle on my way. Its meat and hot blood will help me survive this icy hell. May 30th, 1270. The Yaruga River. The hunt continues to race south. Since I've been following them, they've taken 23 individuals, all between the ages of 10 and 20. All except for Yennefer. बाकी सबको ले गए थे वो सिर्फ नौकर बनाने के लिए, बट येनिफर को कुछ और के लिए ले गए थे। मे बी सिरी कुछ हो, वो अगले गेम में ही पता चलेगा। अरे गेम ही बंद हो गया ये तो। Letho. July 25th, 1270. The forests of Angren. No mighty mortal, no heap of meat or strong man can parry the strike of the Slizzard's tail. Letho couldn't either, but by some miracle he survived. I helped him. After all, Witchers on the path should help each other. He had 2 comrades, brother Witchers from the School of the Viper. The hunt continued south,
And Letho of Gullet knew where it was going. He knew where the hellish chase would end. Fighting the The wild. winter solstice 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. By the gods, they're closer and closer. They'll not catch me. To the workshop. They'll not find it there, over my dead body, Horsons. You'll never fathom Master Baltimore's secrets. It's not far now. ये Baltimore stream. Aryan level had survived. Honor's a curious thing. Honor made Aryan fight a mismatched battle against the might of Temeria. Facing defeat, Honor told Aryan to bow his neck to save his men. But that same honor prevented him from saving himself. King Hansel survives. Roach had murder in his eyes. He wanted blood and couldn't care less that it was royal, that this was what Letho would have wanted. The death of a king is the triumph of chaos, civil war, famine, fear among common folk, a time of disdain. That is the only reason Henselt remains alive and Kedwen grows stronger. Thousands of Kedwenis live better lives because their ruler is an amoral, ruthless son of a bitch who stands above the law. Okay. Choosing Yovath. Terrorists, murderers, a death squad. Or freedom fighters in an uneven battle, noble in their suffering. It all depends on your point of view. I helped Yorvith. I gave him my trust. I joined Saskia and took the side of the rebels, their new values and ideals. Time will tell if I was right. One man's revolution is another man's terrorism. One thing is sure. Elves are the best archers who have ever walked this earth. One thing is sure. Elves are the best. Prince Stennis survived. Prince Stennis, a poisoner, coward, and schemer. He trembled with disgust when he spoke to the peasants. Disdain flowed from him like vomit. But he didn't deserve to be lynched. That was not the justice Saskia fought for. Prince Stennis I, son of Demavend III, became the 17th king of Edirn.
He won the hearts of the people. They saw him as the hope of the nation. The realm, ravaged by war, needed a ruler sensitive to the plight of his subjects. King Stennis I was just that. You're with stream. Eseth Mahon, tal este in pedon, elrannet Illyrian, Feredain Mahon, hel daumas. Back. Memories and the Devavent session. ठीक है गाइस, अपना यहाँ पे ख़त्म होता है विचर 2 एसेसिन ऑफ किंग पूरी तरीके से। आई थिंक कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। न्यू गेम भी अगर मैं करूँ तो ये विचर से, हाँ ये सब हो गया। ये फालतू टूर्नामेंट बचे करने के लिए, ठीक, तो अपन नहीं कर रहे, हो गया। ठीक है, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी लोग शुरू से आखिर तक देख रहे हैं, होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर भाई, सी यू नेक्स्ट टाइम, सायोनारा।